Good evening, ma'am. Hello, Good good evening, evening. ma'am. Very good evening, everyone. My audio is fine? You are Good able to evening. hear me? Yes, ma'am. Very good evening to everyone. Alright. So, how was your week? Very busy, ma'am. Very Very? busy. Very busy? Yes, ma'am. Today I had class and at 4 p.m. I just got home and so busy. That's a All Saturday. Saturday got classes, correct. Okay. Good. So, excited to learn about compensation and benefits? yes, ma'am. Something new, a little mathematics, financial part of salary in human resource management. That's what we are going to talk about. All right, so let's begin. So tell me first that how many of you have ever got any job or in exchange of your services you got any kind of payments? Ma'am, your voice is a bit low. Yes, ma'am, your voice is That's what I asked you initially. Is my voice clear? Yes, system is correct. Yeah, it's better now. Yes, ma'am. Okay. So what I'm saying is that any one of you ever worked and you got some money in exchange of your work so far ever in your career? Except Namita. Namita, I know she's got. Who else? Anything that you've done, maybe in your school, college. Ma'am, I have got one. Yes, Devansh. What did you do Ma'am, I and have how done much? IT from Leela Ambience. Okay. Ma'am, I have done IT from Leela Ambience. All right. Intern. Ma'am, the stipend was about 4,000. It was just an internship. Mm-hmm. So they pay me through bank account, in my bank account. Very nice. Very nice. And what kind So of I got, services you provided? for 4 months, I got my Very stipend. good. All right. Ma'am, So. I worked in 4 departments like kitchen, F&B, Mm-hmm. Okay. housekeeping and front office. Okay. Great. Yes. Okay. So Anamika can also share the experience, right? She also got because she did some services. So why do you think the question is basically is to find out and to know why do you think that we provide some services in exchange of money? Why it is being done all around across the world? What is your thought on it? Ma'am, I think money is a kind of basic need. Or with money we can get our or fulfill our basic needs. So if I am I am doing any work and in doing that work I'm getting some money, so this will be kind of motivation for one person that हमें payment मिलेगी और I will be paid. So that is why I think Okay. इन दोनों में ये relation. All right. Also, Any other thoughts? Yeah, Namita. Yes, carry on. also, ma'am, and money is the reward which we get for investing our time and efforts for the work. Correct. So money is the reward that you get. Why not any other reward? Why money? Because, ma'am, usually as humans we give priority to financial rewards and financial incentives rather than for non-financial incentives. Non-financial incentives plays an important role when we reach that level where money does not like seem very important to us. But from the basic level, financial incentives are more important. Okay.
ma'am, we can get any reward or any gift by that money. So I think money is more important than gift. Gift comes with the emotion or feeling, but the money is just straight. Very good. What does CA has to say? Hima. CA फाइनेंस की बात कर रहे हो, CA का ओपिनियन ना हो ऐसा हो नहीं सकता ना? We'll have some monetary considerations and non-monetary considerations. Correct. Based on the work. Very true. So see, this is what we say, na, expertise has spoken. No, it's perfectly fine. Very good answer you have given. See, in one line you summarized everything. You know, what Srishti and Anamika actually said, you summarized in one line that there are a lot of things that gives happiness to us. That's what is non-monetary incentives or rewards. And then there are things which obviously, because the world goes around money, everything that we go out, any kind of utility services that we have to buy, these all comes in exchange of money. So that is the reason why most of the organizations, or not most, in fact every organization, consider payment in monetary terms to any employee, whosoever is there in the organization, in exchange of the services that person has provided. Right? Now next question to all of you is to put you more into that thinking mode, that what do you think that other than monetary rewards we can give to the employees, and why should we do that? Ma'am, the organization can provide social recognition to the employee, which will help to boost his own morale, and he can contribute. Like if that employee has passed that break-even point and is now above in a good position, in that case, social recognition and some kind of social benefits would help to motivate him and to increase his productivity and his interest in the work. Correct. Yeah, very good. Anybody else who wants to put their thought? Raji, Aditya? Yeah. Other than money, organization can organize training programs. Very good. Yes. Ma'am, other than money, the organization can provide other facilities like Mediclaim and other things, because employee satisfaction is very important for the well-being of the organization as well. Correct. And not just satisfaction. See, money is provided by every organization. So if you want to remain a little focused on your employee retention and you want to keep their morale high, like you said, so that you can provide them something extra. All non-monetary benefits actually show that the employee has a feeling of care and concern towards you. When do we start? Jaise Srishti ne bola, when do we get gifts? So gifts has a very emotional touch to it, some feelings attached to it. That's how we have been brought up, right? Since the very beginning, when somebody gives us gifts, that means there is some emotional touch or there is some personal touch that we have with that person, right? Any random guy or random person will not come and gift us anything. So in order to show that care and concern, that value, that an employee is valued inside the organization creates this system of which we call as compensation and benefits. Right? Now as in human resource managers or human resource strategist or whatever you have to become tomorrow, what is your role as an HR into compensation and benefits? What do you think you have a role to play? हमने hiring कर लिया, we brought the people inside, we designed their job description, that what they have to do, we help them achieve their KRA and KPIs also, and then we give them trainings and development for their career growth so that they can succeed. So now what HR has to do with compensation? Why it is not a finance function? Ma'am, because HR works is to see if the employee is getting the compensation or not, और मतलब inequality तो नहीं हो रही है कि कुछ लोगों को मिल रहा है लेकिन bias तो नहीं हो रहे हैं compensation देते समय. I think these things.
Yes, one is very important, that bias should not be there. What else can be there? Ma'am, as HR managers, As we studied different laws regarding Bonus Act, Labor Act, Hmm. uh, we have, as a HR, we need to have some idea. We should manage the employees, maybe Right. the role of HR. Correct. Yeah, so it's a part of the act basically. It says that we have to provide the monetary benefits. So compensation management basically, generally in HR language we call compensation management, where we talk about salaries and remuneration to be paid to the employee. But in the law, generally there is an act called Compensation Act. That Compensation Act talks about when an employee meets with an accident and they get into a problem where they are either temporarily disabled or they become permanently disabled or there is a death during their work. So that compensation act is different than what we talk about here in compensation management, right? Compensation management is all about remuneration, salary payments and all. Right? That will be there. Yes, all other acts like PF, gratuity, bonus, all these have a direct implications on the kind of salaries we design, for the compensation packages that we design for every employee. So what I'm asking is that why HR has to play a role in the organization in terms of designing a good compensation package for employees, because as we all know that at the various stages of hierarchy, not everybody gets paid equally. Right? People who are at the lower level of hierarchy may be paid less than the people who have enough number of experience as well as some degrees or merits attached to them. They will be paid higher than the other people. So in order to see, in order to balance it out, in order to create a benchmark that what kind of people will get what kind of bracket of salary, what kind of compensation will be paid to them, what kind of extra benefits will be paid to them, that's where the role of HR comes in. So the calculation part, the providing part can be done maybe by the finance department in many organizations, but the designing part, the strategizing part, putting in the best practices, what other organizations are following, what we can bring in best, so that our people are really happy with good motivation and morale, they keep working in the organization. The compensation management also becomes a retention tool, right? So this is the definition of compensation from different MBA books, that what they say, a system of rewards that motivates employee to perform. Right? That's what you all said. Second is a tool used by organization to foster the values, culture and the behavior they require. Right? Because it's not just about your services that you're providing, it's also about what kind of culture, value and behavior that you bring into the organization. That has to be also punctual, discipline, etc. Right? Last is an instrument that enables organization to achieve their business objectives. Right? Because when there is a goal attached to whatever services you are providing, then only you will be compensated for that. Right? There are a lot of organizations, what they have started doing is they have started keeping two portions of salary. One is flexible, one is basic, fixed, which is, so no matter whether you reach your budgets, whether you reach your targets, whatever services you provide, even if you're coming to the office for regular time period, whatever is assigned to you, then you will be paid because you are putting in effort. Then there is a flexible portion of it which says that if you achieve targets, then you will be paid over and above your salary packages also. There are chances that if you achieve more than 100% of your targets, you will be paid much better salary. So keeping that flexible option in place, that means they are keeping you aligned to all the business objectives. Also they are keeping you motivated so that for some extra money, for some extra benefits, you are able to provide more than what is required for the job, or at least to give your 100% as an employee. Right? Now, what is the objectives of compensation management? So again, one of you can start reading, and then we can discuss about it. Yeah, Srishti, you can read. No problem. Okay. So number one is, yeah. Adhiracha is saying something.
Not able to hear you, Aditya. Your voice is not coming. You can type in the chat box. My voice is not clear to everyone or just to you? Yes, ma'am, your voice is breaking in between. I mean, in between your words are not audible. That's because अनामिका का और अधिरिचा का network problem दिखा रहा है computer. It's not my network problem, it's yours. Anybody else is also facing problem? Then it's not my network. No? Because when you speak, it shows that Namika's network is low, and when Adiricha is speaking, again it is showing that her network is low. So that's the reason why you're not able to hear it. Yes, ma'am. Oh, sorry. Yes, Srishti, you can continue reading. Yes, ma'am. First, the objectives of management, compensation management. First point is to attract and acquire qualified and competent employee to meet the organizational objectives. Second, to secure internal and external equity. Third, to control the desired behavior of the employees. Fourth, to reduce conflicts and grievance. Fifth one, to ensure industrial harmony. Sixth one, to simplify minimum bargaining. Seventh, and the last one, to facilitate payroll and pay system. Alright, so who would like to elaborate the first point? It's easy one. Hima? Would you like to explain the first one? To attract and acquire qualified and competent employees to meet the organizational objective. So what do you think it means? If they achieve the targets or employee performance is well, if we able to reward non-monetary benefits more apart from salary, wages, others, we can attract more employees to meet the objectives. Alright. It's a very simplified, right? To attract the best of the people in the organization, best of compensation management, compensation and benefit will be designed. Second point, who wants to explain? Prachi? Yes, ma'am. The second point is about to secure internal and external equity. When the compensation management will be there, it will provide equity in the organization in internal terms also and in external terms also. What is equity? Pardon, ma'am? What is equity? Ma'am, equity is when everyone gets what is required to them. Hima, what is equity? Generally, we have equity funds and debt funds. Correct. Yeah. In So it this is. way, maybe it's not that meaning. No, it is about that only. Ma'am, equity is the part of the share capital which is offered to the external shareholders, which get rep. Absolutely. So it's a fund basically that an organization has, and they take care of it in terms of payments. So there is a stock options which are available for every organization. What is their market value in terms of when they take out the valuation, right? From a very qualified CEO, from good financial people, they get to know what exactly is my market value of the organization. For example, छोटा सा कंपनी है, स्टार्टअप है, उसका मार्केट वैल्यू मार्केट में मे बी 50 करोड़ होगा. So now when they share, they start doing it in the IP format, which means that they start opening the share options, that the options is available, that they are listed in National Stock Exchange, and there are shares which are available for open public as well, not just for the employee but also outside the organization. Right? This is what equity is all about, right? We are not going into the detail of it, otherwise it will require a lot of talking about finance management and accounting, so I really don't want to get into that.
But just to make you sure that it's like kind of stock options which are being paid to the employees as well, and it is open for the general public also. That means you can buy the shares of your organization, and when the share value increases, there are chances that you also become very rich. तो इसका एक एग्जाम्पल जेफ बेजोस की कंपनी में हुआ था, नहीं नॉट जेफ बेजोस की कंपनी में, इट हैपन्स विद अलीबाबा. Alibaba is a Chinese company. Alibaba started on a very small note. It was a very kind of a startup firm, right? It has a similar kind of business what Amazon do, but there was a receptionist who used to work there in the organization. So they opened their stock options at that point in time. maybe उनको कंपनी स्टार्ट किए हुए 4-5 साल हुए थे. So she bought some shares of the organization. Then later on, after 15 years, I think she became AVP, Assistant Vice President of the organization, because she was very diligent, she was working hard in the organization, all that stuff. And at that point in time, she thought of selling those shares, and she became one of the richest employee of that organization. Right? So Alibaba के stock कितने? So 15 साल में what she bought maybe of 10 rupees per share kind of a value, when she sold it out, it was basically in crores. So that is the kind of value stock options can have. So when we design a good compensation management, we say that internal and external equity को secure कर रहे हैं. That means people who are inside the organization and people who are outside, through proper compensation management, we are ensuring that everybody gets valued. Third आता है to control the desired behavior of the employees. Very simple to understand. I don't have to go into the details, right? To reduce conflicts and grievances. So why conflicts and grievances can arise? Now suppose all 5 of you, 6 of you joins the organization, same organization, right? All 6 of you have come after joining, after completing this course, YSI course. So they give value to this particular course, and somehow the organization is not able to justify that why are they paying less to Srishti and more to Prachi. So there are chances that you might have a conflict, that we are both graduates, we are both have done the similar kind of course, and why there is a problem that both of us are not being paid equally. Right? So in order to avoid such grievances and conflicts, there are complete scales and grades which are decided, so that every organization can pay equally to each and every employee who comes with a similar background. So if you are a graduate, you have a diploma from YSI, and you have no work experience, there are chances that you are being paid equally in the organization. Right? That's how the scales are being decided. Now suppose ऐसा केस हो जाता है that Srishti and Anamika joins an organization together. Now Srishti has not taken any internship, she has not taken any work experience, and Anamika has a work experience of 1 year, right? Rest all other things, their graduation, their diploma remains the same. And if the organization starts paying more to Anamika and less to Srishti, then is there a conflict should arise? No, right? Because she already has 1 year experience, which will also be counted as per the scales and grading system of the organization. So your qualification, your experience, in qualification also which college do you come from, that also gets a grading system in the organizations. So people coming from say top institutions may get a little better pay package than people coming from B or C category. That's how most of the organizations have done. But there are very good organizations also who don't really give that kind of a disadvantage to people who come from B or C category. They purely look into the knowledge and skills part of it. Right? So that can differ from organization to organization. Fifth point is to ensure industrial harmony. Now what is industrial harmony? What do you understand by that? Ma'am, there are no strikes or any unnecessary actions on the part of employees and the workers. Right. So because अभी तो हम कंपनी के अंदर का बात कर रहे हैं, वन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की. नाउ इंडस्ट्री क्या हो जाती है? सपोज देयर इज अ लेट्स से lot of companies who create similar kind of products, so they are called industry. All of them becomes a part of it. So to keep the industrial harmony, each other organization generally shares their price of compensation with each other, so that there is a industrial harmony also at place.
that none of the organization are actually creating such kind of benchmark कि एक कंपनी तो कॉम्पिटिटर की 10 रुपये पे कर रही है और दूसरी कह रही है मैं 25 रुपये पे करूँगा सेम सर्विसेज के लिए. That means then you are creating a disparity within the industry, right? So to keep that also in check, there are laws and acts which comes to play, which says that within an industry you can have a little bit of change in the salary, but you cannot really have a big disparity in terms of what you pay to the employees. And that is the reason the Minimum Wage Act has been designed. So Minimum Wage Act says that people who are not qualified at all, completely unskilled, people who do manual work, जिसमें आपको कोई skill की ज़रूरत नहीं होती है, just a manual physical work that they have to do, they should be paid minimum this much amount every month. State-wise, this amount can change. So Delhi may be having a little extra because cost of living is higher. Then UP might be having a little lower because the cost of living is not that high. So for example, Delhi ka I think it's around minimum wage is around 12,000 something, decent wala. UP ka aata hai somewhere around 10,000. So minimum wage says that any employee who is producing or who is doing any kind of manual work is purely unskilled. Unskilled means have no qualification to justify. They are just doing physical work. They should be paid minimum this much of salary. Right? Other than that, they should be a part of ESI. Right? So ESI takes care of their mediclaim, their all medical things, or in case they met with some accident in the organization. Right? So till the level of 21,000 rupees salary, everybody who gets less than 21,000 rupees salary per month are part of ESI. That's compulsory. There is no such thing that they should not be doing that. Right? These are the basic rules. I'm just telling you the basic things which are there in the act. You can read the act later on whenever you have time. What is ESI? Employee in State Insurance Act. ESI Act. Similar to PF, but PF का कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक पे करना है. ESI का लिमिट है, तो 21,000 से नीचे के सभी employees should be a part of it. In case an organization has their own internal mediclaim facility, then there are chances they may not give this facility of ESI to their employees because then these employees will be covered under mediclaim. Right? So private organizations will be taken care of. But in case that is not there available for every employee, 21,000 से less than any employee whose total salary comes out to be 21,000 has to be a part of ESI Act. Right? You will see every city has ESI hospital where these people can go and they can be reimbursed from the government for any kind of medical emergency or emergency like that. Right? तो नेक्स्ट आ जाता है आपका 6 पॉइंट टू सिंप्लीफाई मिनिमम बार्गेन. सो मिनिमम बार्गेन का मैंने आपको पहले ही बता दिया दैट मिनिमम वेज एक्ट टेक्स केयर ऑफ दैट थिंग. सो मिनिमम वेज एक्ट वर्क्स ऑन 3 levels: unskilled, semi-skilled and skilled. So people who provide unskilled workers, they are also taken care of. Semi-skilled means that they have some diploma, ITI वाला ऐसे वाला diploma and then they do. And skilled मतलब कि कुछ सीखा हुआ है vocational course करके, छोटे छोटे courses करके, right? तो इन 3 कैटेगरी में लेबर्स के लिए जनरली ये बनाया गया है. पीपल हु डू लॉट ऑफ फिजिकल एंड मैनुअल वर्क, पीपल जनरली ऑन एट द शॉप फ्लोर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. सो मिनिमम वेज कवर्स देम. Unfortunately, minimum wages does not cover officers. Officers means executives. People, suppose you have done your engineering and you join an organization can pay you 6,000 rupees also. Because it doesn't cover up that you have to be paid. I'm not talking about internship. Internship mein to yes, you can pay any amount. But as a salary, there are engineers in India who are being paid 6,000 rupees salary. Unfortunately for them, for executives, they are not minimum wage act, and that is the reason why none of us can do much about it. Yeah, you wanted to ask something, Srishti? No, ma'am, I was saying कि आपकी आवाज नहीं सही आ रही थी. अब ओके, कहाँ तक नहीं सुनाई दिया? मैम ये आप you were telling this is minimum bargaining or minimum wages, this part.
So minimum wages, what I'm saying is that sometimes when you are in organization, suppose you are the HR manager and you have to see and find out the salaries of various people. So there are chances that to the labor or unskilled or semi-skilled labor, you will be paying according to the minimum wage act. But on the other hand, you might have a qualified BBA or an MBA or an engineer who you are paying lesser than minimum wage act, right? Because that act does not cover anybody in the executive level. That's an unfortunate part of the labor laws. That's the flip side of it. So there are chances that people might come to you and they can ask you, argue you if they are aware about the labor laws, acts and everything. So you need to be prepared about such questions and answers. That is the reason why all the acts, knowing about all the acts is very, very important for every HR manager. Right? No matter which industry you are. लास्ट आता है इसका पॉइंट आपका टू फैसिलिटेट पेरोल एंड पे सिस्टम. सो पे सिस्टम, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर इज अ ग्रेड सिस्टम, a scale system which is in place in maximum organization. They follow that particular thing and then on the basis of that they design the salary structures of each and every employee. We will come to that part later. It's a part of this chapter itself. So you will get to know about these things in details. If time permits, we might do an exercise tomorrow where I'll give you this exercise to design the salary structure, because it's very important that you do it by your hand so that you get that practical exposure to design a good salary package for everyone. Now the employer's objective. What is the benefit to the employer if they are giving good compensation or salaries to the employees? So Prachi, you want to read it? Yes, ma'am. Yeah, go ahead. Employers' objectives. First, to justify the cost of to the company through performance and productivity improvement. Second, to ensure industrial harmony by satisfying the work of the employees. Third, to comply with legal rules. Fourth, to boost the morale of the employees. Right. So what do you understand by the first point? Devansh? Devansh is not listening. Shakti? Yes, ma'am. Yeah. We can from first point we can identify that what is the performance of the employees and what goods and products are we use or improve in our company. That's from that we can decided that how much cost could be improved in every employees. And that's all. Okay. Second point, anyone? Aditya? Not able to connect. Okay. Yeah, Srishti, you can elaborate. Ma'am, honestly, I'm not getting the point. I didn't get the first one either. Achha, first one you could not get it. So let me know, na? When you are not able to get it, just raise the hand and let me know. Okay. So the first point says that to justify the cost to the company, that every employee is a cost to the company, that we understand. That is the reason why our CTCs are fixed. In every organization when we go, so they generally say, what is your CTC? That's what we ask when we get an employee when somewhere. So that CTC is called cost to the company. So anybody who works for a company basically gets paid is basically a cost to the company. Right? So to justify each and every cost to the company, we manage and see their performance and productivity improvement. So that is the reason why I always say that performance training and then compensation is all together on the basis of your performance. So first month, so first time, suppose again the same example, let's continue, that all of you get job in one company, same level, same everything, right? So let's say just 25,000 rupees salary for everyone to start with.
After a year, over various reviews and feedbacks, organization will see how much to give raise to everyone, purely on the basis of your performance and productivity that you have contributed to the organization. Not now on your qualifications and merits, but also on your performance and productivity. Right? That's how we justify the cost to the company. That means the compensation that is being paid now, after you have an experience in the organization, your performance will also play an equal role into that. Okay? That is why many people can now, even in the same hierarchy, some people might be paid 32,000 rupees and some people might be paid 28,000 rupees, purely because the performance rating says that. So suppose your performance rating says after a year that Srishti has performed on the scale of 1 to 5, says let's say 3.5, and Prachi has performed 3 and Adiricha has performed 4. Right? So there are chances that Adiricha might get better raise than Srishti and Prachi. Prachi might be at the lowest because her rating is at the lowest. Right? Got that? So this is what the first point says. Second point आता है to ensure industrial harmony. Same thing that we talked about in the previous points. Right? That every employee, see, because everyone deserves to get paid purely as per their work that they are providing in the organization. Right? If you are giving 9 hours of your day in an organization and you are working very hard, you are doing everything, sometimes your results should not matter that much. Purely because you are putting in your efforts and there are chances that some external factors are also creating hindrance in your results to come out. Right? So to bring that industrial harmony, again the organizations ensure that they should be paying as per the worth of the employee that they are putting in for the organization. Third आता है to comply with the legal rules. It is mandate for every organization to follow certain legal rules and pay it according to the legal rules. Fourth, to boost the morale of the employee. Very simple. If the employer will not pay, so it's not just for the monetary benefit but for raising the morale and retention also. फिर आता है employees' objectives. So what is the objective of the employees, everybody who works in the organization? Number one is to get equity-based remunerations. Equity-based remuneration here means that everybody should get equal pay as per their value that they deserve within the organization. So if I am from a top institute and I am getting a good job in an organization and there is somebody who is not really from a very top institute, still get the similar salary, that doesn't qualify for equity-based remuneration. Right? Because there are chances that persons going to A grade institution might have paid higher fees also, and the kind of qualifications and the certification key value is much more higher than anybody else who is on the same level. Right? Second is to satisfy their worth. Similar thing, that our worth needs to be satisfied when we are in the organization. That is the reason many people leave the organization also, because they don't feel that they are being paid as per their worth, and they try and jump to any other organization where they feel more valued in terms of giving the monetary benefit. Ma'am, in the second point, can we use the reference of Maslow's need hierarchy theory, that self-actualization, self-esteem needs? Not just self-esteem needs. Self-esteem needs comes at the later part. Generally, that is the reason why Maslow hierarchy के बारे में क्या होता है, the basic need is to cover up your minimum things that is required, roti kapda makan types, right? Second is then your security and safety, that you are secure in the job and you have a good house to live in. So your rent and HRA and all those things are taken care of in the compensation. Then ऐसे ही लेवल पे हम ऊपर बढ़ जाएंगे तो टॉप मोस्ट कम्स एज सेल्फ एस्टीम. सो टॉप मोस्ट यू रीच ओनली व्हेन you have reached all other four, or you have covered up all other four, right? That is the reason why many organizations provide example like a club membership to the employees who are at the top grade, only the leadership management. They don't provide it to everybody कि गोल्फ खेल सकेंगे, क्लब की मेंबरशिप भी दे देते हैं. जो अच्छे अच्छे क्लब्स होते हैं लार्जर सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में, दे कॉस्ट देयर membership cost itself is very heavy, 5 to 10 lakhs rupees per annum generally.
right? So if you want to join such clubs, that means you have to pay out that extra money. So just to keep them in that self-esteem worth that they are qualified enough or their worth is now to reach to that status, because chances are that सपोज somebody is at the leadership position, कोई VP बन गया है या CEO है organization का या at the very leadership position, these people are going to meet the clients who are also at that stage, right? They are going to meet the government people who are at higher category. They are going to meet people who are working in higher capacity. So the chances is that when they join such club memberships or something which is equal to that worth for self-esteem, there are chances that they are going to bring the business also back to the organization, right? अब अगर आपको किसी और कंपनी के, सपोज यू आर मार्केटिंग मैनेजर हो, राइट, अगर आपको किसी और कंपनी के VP से मिलना है फॉर सम वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू कम, राइट, सो वेयर विल यू फाइंड दैट VP? ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो, उनके चक्कर लगा रहे हो कंपनी के अंदर, दे आर नॉट गिविंग यू टाइम बिकॉज यू आर मार्केटिंग मैनेजर, देयर आर चांसेस दैट दे मे नॉट मीट यू, Yes. right? So what do you do? How will you meet that person? Organization appointment नहीं मिल रहा है, so will you let it go or you will try to meet that person because the business is important? No, ma'am, I won't let it go. Then We'll how try will you to meet? Yeah. How will you meet that person? That's the question. इसी के अंदर तुम्हारा आंसर भी छुपा हुआ है. Ma'am, I'll get in touch with the person who is below VP, and if in case the other person is also not available, then go a bit more down towards the hierarchy, either up to my position or someone, I mean, who can make me in touch with the VP. नहीं होगा. If VP has decided not to give you time, फिर अपनी कंपनी के जूनियर से भी नहीं होगा. What are the chances that you meet? Anything, go out of the box and think. What will you do? Ma'am, if they do this thing to, I mean, every second person, then this would hamper their goodwill in the, I mean, later. But if I return back to my company with this impression that the VP does not meet and they are not very attentive towards the guests or towards other companies' employees, then this would happen. Nothing matters. Nothing matters. अभी तो हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं. सपोज यू हैव टू मीट फॉर सम वर्क एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इवन इफ हिज और ही और शी इज नॉट दैट सीनियर, still there are chances that there might be lot of rejections that they may not meet you because उनको पता है आप काम के लिए आ रहे हो. So how are you going to deal? See, that is the reason why I said that the club memberships and all those things are important. So what companies try and provide these services is purely for the benefits that you bring to the organization. So lot of if you have to meet a VP, there are chances a VP might be a part of some membership of a club. You will be having a membership of a club, right? Your organization might also arrange that for you. Maybe for you, or maybe you can take somebody's senior membership and you can go. There are chances that that person might be interested in playing golf or maybe some other sports which is not available for general public, right? So you go and plan to meet that person in that golf course and try to have a meeting, create an impression, whatever, right? So when we talk about reaching self-esteem in an organization or reaching a status procure where you have to show because when you are a very senior leadership kind of a role, you have to show that worth to everybody in the society that your status has also improved. You cannot drive a Maruti 800 car, Maruti 800 to चलाती नहीं है, Maruti Alto car when you were an executive, and when you become a leader you still cannot drive that car and come to the office, right? Because you have to have that self-esteem, you have to have that worth, you have to show your status also in comparison to what your salary is, right? Your status is or your hierarchy is. So that's what it talks about, that to satisfy their worth, every employee feels that I deserve much better, or I feel, because you are the best judge. That is why we do SWOT analysis, right? To do an introspection.
that we are the best judge at how much time and money and how much contribution are we putting in for the organization. If you are not able to put 9 hours fully, or even if you are putting 9 hours fully and there is nothing which is happening, absolutely राइट, आपके जो 100% टारगेट्स हैं, जो KRA KPIs की आपने बात करी, उसमें से आपका अचीवमेंट ही 30-40% का हो रहा है. So why should company pay you at that extra 60% if you are not achieving that goal? Right? So first judge is we ourselves, that we should know our worth, and then when we know our worth, that if the company is paying me less, then I am much more valued, then I try and change the organization. No? Why should I keep waiting? Either I prove my worth to the organization, even after putting that effort, they are not giving me that, then I might change the organization. This is what happens. Right? That's why it is an employee's objective that according to my worth, every organization has to pay me. Third point, other to have cushion for price inflation. So inflation is that cost of living keeps increasing every year. After when the budget comes in, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है. अभी जैसे पेट्रोल के प्राइसेस सडनली बढ़ गए हैं, right? So that is basically price inflation which is happening. So ensuring, every company has to ensure that every year price inflation is happening. That means at least 5 to 7% of salary raises should happen to everyone, so that inflation cost is covered, so that your cost of living should not really be hampered. उसके ऊपर जो appraisal मिलना है, that is purely on your performance and productivity, but that much is basically the cushion for keeping the price inflation in check. Fourth is to have security and welfare considerations. Now security and welfare considerations means that if I am an employee for say 5 years in your organization, so automatically the organization's what do you call it, responsibility to provide that kind of a safety to the employee in terms of that their job is not going away. अब जैसे कोरोना का टाइम आया था 2020-21 was a very painful period. Many organizations, what they did was they let go of their employees without even thinking that in difficult times what is the impact that is going to have on their life. Correct? So that means their security and welfare considerations was just the talk in their policy matters. It was not really. Very few companies, I think it was handful of companies, 100-200 companies in the entire world who took care of their employees really well. Not even a single rupee was deducted. They were being paid fully, even if they are not working. They tried to get the work done online through various means, by getting in touch. Even if the employees are not able to work properly, still their salaries and everything would not stop. So that is what an employee deserves, that when I am putting so much of effort for an organization, when the difficult time comes in, what I require is safety and security from the organization. So that's what they should get in return. So security can be job security, education security for children, similar such securities for whatever we require in our life. Right? So process होता है compensation management का. I think this photograph is not very clear. Still it is readable. So compensation management process says that there should be an organization strategy first of all. Right? After आपका vision और mission statement हो गया है, there has to be an organization strategy which says that organization क्या contribute करना चाहते हैं society में, and why this organization is running. What is the strategy for this company? Then from that strategy they design compensation policy. So compensation policy talks about किस level पे salaries देनी है सबको, what kind of salaries, what kind of benefits that can be added. कुछ taxable benefits होते हैं, कुछ non-taxable benefits होते हैं. All those things then kept in mind when we are designing a compensation policy. Now compensation policy is directly linked with job analysis and evaluation. The first class that we talked about, आपकी जॉब एनालिसिस जो हमने किया था, उसमें भी हमने बात किया था कि आपके जॉब, व्हाट काइंड ऑफ रोल यू आर प्लेइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू ब्रिंग द इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मनी यू शुड बी गेटिंग. That's very important. So not just your qualification, not just your experience, but how valued as an employee you are for the organization, you are being paid for that also. How critical is your role? कितने लोग अवेलेबल हैं उस रोल के मार्केट में.
right? That is the reason why you will see that कोई बंदा होगा बहुत कम qualified, but because उसका role ऐसा है जो कम लोग play कर सकते हैं organization के अंदर, that's why he or she is getting paid a little higher than other people in the similar category. Right? So that is also one of the important point of giving salaries or calculating salaries and compensation. Then आ जाता है analysis of contingent factors. So contingent factors similar to what I was talking about कि कोरोना आ गया, now every organization जो भी हमने मैनेजमेंट में पढ़ा था, MBA में जितना भी पढ़ा, कंपनीज के अंदर हम काम करते रहे, सब में पढ़ा कि हर कंपनी का एक मिसलेनियस फंड या कॉन्टीजेंसी फंड होता है. कॉन्टीजेंसी इज बेसिकली कोई भी मिसहैप हो जाए, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी दुर्घटना हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, डिजास्टर आ जाए, एनीथिंग. So every company should have a contingency fund which they can utilize in time of emergency. And I was actually wondering that what happened to all these organizations and their talk during Corona time period. उनका कहाँ चला गया था contingency fund, right? So that is what. So analysis of contingency factor looks good when we talk about it in theoretical terms, but practically छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो organizations निकाल देते हैं contingency fund, but for a bigger things like this thing happened, everybody failed. So that is a lesson that many people would have learned during these 2 years is don't get attached to the company you work for. Work because you are being paid, because you are in love with your job, your work, but not with the company. Then आता है आपका design and implementation of compensation plan. Now this stage is very important for HR managers. This is where your role comes in. That we have to now, you got to know about all these things. There are subject matter experts who are doing the other things. Compensation policy उन्होंने बना दी, job analysis evaluation उन्होंने करके दे दिया, contingency factors उन्होंने count कर दी. Now you have design and implementation of compensation plan that you have to do. कि क्या components आने चाहिए salary के, किस तरीके से कब देंगे, कौन से day को salary जाना चाहिए. We will talk about that in detail. I'll show you the Excel sheets how we need to do. Then last में आ जाता है evaluation and review. So same thing, evaluation and review is basically evaluating whether everybody is getting as per their work, as per the rules and regulations, as per the laws and legalities or not. If not, then we will review it again. Then this entire process then will follow again. Right? So this is what happens. Break ले लेते हैं 5 मिनट का, and then we join back, and then we continue. Yeah? Okay, ma'am. Alright, Sure. let's take a break and come back. 7:20.
Yeah, shall we begin? Yes, ma'am. Everybody is back or on break? Ma'am, I have a question. Yes, Can I ma'am. ask? Can I ask? Sure, please. Ma'am, like in the process page or the previous slide, this all the job analysis and means this is a lot of work for every particular job. This all process has to be done. So it's a lot of process. Like मतलब मैनेजर है तो उसके लिए अलग और उसके नीचे. Absolutely. So suppose, see, depending on the role that you are playing in the company, it's not on the designation, but more of the role that you are playing in the company. For every role, there would be a job analysis which would be created. Right? So I don't know how much you remember about job analysis now. So job analysis says that there are two parts: job description, that the roles and tasks that you have to play, and the kind of qualifications and eligibility that you should be having. Right? So every job analysis will be talking about the role that you are playing in the organization. Designations comes later on. So designation का change जब होता है, that part can be taken care of by the scales and grades in the salary. बट फर्स्ट टाइम जब हम किसी रोल को भी डिफाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो सपोज हमें मार्केटिंग रोल डिफाइन करना है. अब मार्केटिंग के अंदर कितने वेरिड तरीके के रोल्स हो सकते हैं वो डिफाइन कर देते हैं जॉब एनालिसिस में. फॉर एग्जांपल, कोई बाहर जाके पैकेजिंग वगैरह को देखेगा, उसका रोल क्या रहेगा मार्केटिंग का. किसी ने इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने हैं, छोटे छोटे से चीज़ें ऑर्गेनाइज करानी है, सो दैट द मार्केट इज कैप्चर्ड, दे आर एबल टू रीच टू द पीपल. That is marketing activities, right? So marketing activities भी below the line होती हैं और above the line होती हैं. Above the line generally taken care of large advertisements, boards वाले या TV advertisements, cinema halls advertisements. Below the line things होती हैं जो छोटे छोटे events करते हैं. जैसे आपने किसी मॉल के सामने कैनोपी लगा होगा, देखा किसी प्रोडक्ट का, उसके बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं. जैसे नायका का बहुत होता था. आई डोंट नो इन smaller cities they did it or not. Smaller really काफ़ी किया उन्होंने. They reached Ludhiana, they reached Chandigarh, so smaller cities also they did. So when Nykaa was launching for next 3-4 years, what Nykaa did was they created a canopy in most of the malls in the city. तो उस malls के अंदर जाके then they used to offer free shades कि हम आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं. Free samples of, not to take home, but just to show you how you look. So they give you free makeup, they used to give you free nail paints, they used to give you कि हम आपको लगा के दिखा देते हैं, so that you know you become a customer, you start liking the shades that they are selling, you start liking the kind of makeup that they are selling, and then later on they reach to e-commerce thing in a huge extent, right? So these are called below the line activities. And to design these roles, now not every marketing person can play that role. There are only few who will play that role. जनरली BTL एक्टिविटीज़ जिनको हम बिलो द लाइन एक्टिविटीज़ कहते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा सीनियर लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो जूनियर पीपल कैन परफॉर्म. अबव द लाइन जो हम मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, उसके लिए सीनियर लोगों की ज़रूरत पड़ती है. पीपल हु कैन यूज़ देयर माइंड, हु कैन स्ट्रेटेजाइज, कंटेंट डिज़ाइन कर दें, एक अच्छी एडवर्टाइजिंग की लाइन डिज़ाइन कर दें. तो जैसे आप TV एड्स के अंदर देखते हो कि आपको एक प्रोडक्ट की एक लाइन बिल्कुल रट जाती है, राइट? सो बिकॉज इट कीप्स प्लेइंग फॉर सो लॉन्गर टाइम पीरियड दैट इट कीप्स रिपीटिंग इन योर हेड. Right? And sometimes even if you don't want to buy that product, you go out and buy it purely because you started liking that thing. So that is the kind of impact marketing plays. So this role, which is called above the line, then has a different kind of a role in marketing. That's why this job analysis and evaluation is done role wise. Now ATL wala role can be done by a general manager, a VP, a AVP, we don't know. So designations, whatever it can be. Similarly, BTL wala role can be done by an executive, a senior executive, an assistant manager. We are not aware, but their role should be this much, and then on the basis of their role, we are going to pay them accordingly. Right? Then hierarchy level salaries वो थोड़ा सा change हो जाता है purely because your scales are different. Right? Government sector के अंदर जब scales और grades बनते थे, उसमें ऐसा भी देखा जाता था. आई एम नॉट श्योर इफ़ योर पेरेंट्स हैव एवर वर्कड इन अ गवर्नमेंट थिंग, इफ यू कैन आस्क देम दिस क्वेश्चन. इवन इफ दे आर एट अ मैनेजर लेवल,
देयर आर चांसेस दैट इफ दे हैव स्टेड इन द कंपनी फॉर 10 years और उनका प्रमोशन नहीं हुआ किसी भी रीज़न से, बिकॉज बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं गवर्नमेंट में, तो चांसेस नहीं होते कि सबका प्रमोशन हो जाए. तो सम पीपल गेट रेजेस बट दे डोंट गेट प्रमोशंस. So there are chances that for 10 years if they have stayed in one position as a manager, उनका सैलरी स्केल जनरल मैनेजर से भी बड़ा ऊपर हो गया होगा. तो जो नया एम्प्लॉय जनरल मैनेजर बना होगा उसका सैलरी और मैनेजर जो 10 साल में रह चुका है उसका सैलरी कैन बी इक्वल और लिटिल मैनेजर का सैलरी वुड बी हायर. So that can also happen in organization because this is how hierarchies work. Many private organizations also follow these things, but they are generally older organizations. Newer organizations या जो नए लोगों के साथ younger generations के साथ काम करते हैं, they can't follow this system because we cannot digest this thing. Right? First, we really need promotion. We really need to move faster in our career. And because private organizations के अंदर कमी नहीं है, so many organizations are there, so there are chances that everybody will get promoted at some stage. Maybe not in our organization, but some other organizations, right? So this is how things have changed now, right? So now after this process, there is an admin process, which is basically, it starts from your job analysis. कि आपने जब job analysis किया, you did analysis of the job, and after that you did evaluation of the job, which is writing a job description, कौन सी designation के साथ कौन से एम्प्लॉय को हायर करना है, कौन से इंस्टीट्यूट से हायर करना है, बीटेक चाहिए या बीए चाहिए या बीबीए चाहिए, सो कंप्लीट क्लैरिफिकेशन क्राइटेरियाज. देन डेवलपिंग द पे स्ट्रक्चर. यहाँ हम स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन कर देते हैं कंप्लीट. दैट सपोज इफ समबडी इज कमिंग फ्रॉम टॉप ए इंस्टीट्यूशन, उनका पे स्ट्रक्चर से 30 से 40,000 रहेगा स्टार्टिंग. अगर कोई बी कैटेगरी के इंस्टीट्यूट से आ रहा है तो वी आर गोइंग टू पे देम 25 to 30. सी डी कैटेगरी से आ रहा है सो मे बी अ लिटिल लेसर देन दैट. Right? So ये पे स्ट्रक्चर उसी टाइम डिसाइड हो गए. तो मोर यू मूव हायर इन द हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन, चांसेस आर कि इन पे स्ट्रक्चर का इफेक्ट हमेशा ही रहता है बिकॉज स्टार्टिंग ही लो से हुई है. बट इफ़ यू परफॉर्म रियली गुड, योर प्रोडक्टिविटी, यू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एट सम पॉइंट इन टाइम, देर आर चांसेस दैट यू कैन नेगेट दैट पे स्ट्रक्चर पैरिटी इन द कंपनीज. देन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज सर्वे ऑफ वेजेस एंड सैलरीज. Now it's very important for organizations to participate and to be aware about various salary surveys which is done by larger organizations जैसे McKinsey और BCG. इन सब का काम यही होता है कि सर्वे करती हैं ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा. या नानिका, so you want to say something? Ma'am, I think point number 4 should have been at third position and third should have been at fourth. I mean, because in my point of view is first we should do this survey of what wage rates and what salary rates are there, going on in the market, and then develop our plans, our pay structure accordingly. These are not step by step. This is all happening at one go. इससे पहले वाली जो स्लाइड थी, that is happening one by one. If you see, if you rotate this picture, everything is at one stage. ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए इस तरीके से पिक्चर लगाया हुआ है. This is not one after the another. Only analysis and evaluation is one after the another. Developing the pay structure, survey, pricing of the job, compensation, revision and control will all happen together. Why? I'll tell you. जब आप सर्वे करेंगे of various organizations and other organizations who are paying work, and you can never get to know. Either you start calling everybody and you get to know, which is not going to happen. So what we do is most of the organizations take part in some kind of surveys. These surveys are done by some specific organization like BCG, Big Four, McKinsey. All these people generally conduct an annual survey of what kind of salaries and wages are provided by industry-wise. So for example, if it is textile industry, these are the kind of raises also they talk about. कितने raise होने के chances हैं इस साल, कितना salary मिलना चाहिए, these are the kind of salary levels should be there. So they talk about all these things in details. Then इसके बेसिस पर आप साथ साथ अपने पे स्ट्रक्चर को, क्योंकि आप बना चुके हो, स्ट्रक्चर्स का क्या होता है, स्ट्रक्चर टॉक्स अबाउट कि कौन से कंपोनेंट्स में क्या क्या अमाउंट डाल के देना है और आपका बेसिक क्राइटेरिया क्या है किसी जॉब के लिए, राइट. कि वेदर यू नीड अ पोस्ट ग्रेजुएट और अ ग्रेजुएट टू डू अ जॉब. इफ यू जस्ट नीड अ ग्रेजुएट, then obviously you are going to pay them less. So that the structure would say that this much would be the
pay structure of the field. If you are going to hire a postgraduate, no matter in what stream, what department, there are chances that purely because they are more qualified, they are going to pay higher. Right? So pay structure talks about that. So survey is totally different thing than the pay structure. Right? But it can both happen side by side in an organization. It's not really one after the another kind of a thing that is there. Because wages or salary surveys जो होते हैं, that depends upon performance management system also. कि कंपनी ने अप्रेजल कर दिया, अब किसी कंपनी का साइकिल है अप्रेजल का से अप्रैल टू जुलाई का, 4 महीने का. Some organizations follow July to October. So it cannot happen that all the organizations can do similar kind of pay structures purely on the basis of salary surveys. Yes, Rishti. Ma'am, suppose, like you said, graduate and postgraduate will get different salary. Sometimes it happens the subject of graduation or the post graduation is not the मतलब उसका और इसमें कोई मतलब नहीं रहता है, कोई relevant नहीं होता है. तो even though that person who is a postgraduate will get more salary, मैम अगर मतलब भी नहीं है, उससे कोई रिलेशन भी नहीं है, तो भी क्यों मैम? Just because he or she is postgraduate, like suppose most of the chances are like that. So for example, now you want to bring somebody who has done MSc in science, MSc in some maybe say psychology or something, and they want to join HR, right? And then you have a candidate who is MBA HR. So obviously you are going to pay higher to MBA HR than to MSc. So this is how things are. So no matter whether postgraduate or graduate, after obviously evaluation analysis of job भी आपने किया है, उसके basis पर भी होगा. So all these things plays. See, when we design compensation structure, a lot of things goes into place. अभी तो हम theoretical बात कर रहे हैं, so confusing लग रहा है. जब हम practical करते हैं, तो it becomes even more cumbersome. But thankfully now a lot of good technologies have come, many good software, so you don't really have to do much efforts. आपको सिर्फ अपना सैलरी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ता है कि किस तरीके के क्या क्या कंपोनेंट्स आपने डालने हैं. रेस्ट ऑल अदर कैलकुलेशंस आर डन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो दैट काइंड ऑफ गुड सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल. सर्वे अपने आप फेड होता है उनके अंदर, या कुछ भी सर्वे के अकॉर्डिंग उसके रूल्स फीड कर सकते हैं, एंड देन दे स्टार्ट गिविंग यू. In fact, that machine also tells you that you should be paying this much salary extra to this person. So that is there. But just to keep this role more humane, so because it is also related to welfare of the employees, not just on the monetary terms. So when we talk about welfare of the employees, there are a lot of benefits which goes into the place in compensation and benefits. That is the reason we bring in a lot of human factor to compensation. इसीलिए हम सारा रोल फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी नहीं देते, इसीलिए लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. राइट, तो सर्वे हो गया. सर्वे के बाद प्राइसिंग ऑफ द जॉब निकल आता है, दैट इस जॉब का प्राइस क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है इसकी. तो फॉर एग्जांपल इफ यू रिमेंबर, जब हमने प्लान बनाया था अपने ऑर्गेनाइजेशन का, तो दिवांश ने बोला था कि शेफ्स, उसने रेस्टोरेंट खोलना है, तो अगर अब शेफ़ हायर करना है हमने, तो एक शेफ़ की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए अगर वो शेफ़ को सिर्फ इंडियन खाना बनाना आता है. राइट, सो व्हाट थिंग्स वी विल कीप इन माइंड, वी विल कीप इन माइंड द ज्योग्राफी वेयर वी आर इज, छोटी सिटी है या बड़ा सिटी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, उसके हिसाब से प्राइसिंग ऑफ द जॉब फिक्स होगा. उसके अलावा क्वालिफिकेशंस क्या है, कौन से इंस्टीट्यूट से करके आया है होटल मैनेजमेंट, उसके बेसिस पर होगा. किस तरीके का खाना बनाना आता है, उसके बेसिस पर होगा. एक्सपीरियंस क्या है या क्या नहीं है, उसके हिसाब से. सो प्राइसिंग ऑफ द जॉब देन कैन बी फिक्स्ड फॉर द जॉब, अगेन फॉर द रोल, नॉट फॉर द पर्सन. तो अगर हम मान लेते हैं कि सपोज आई हायर इंटर्न्स, so now you are 8-9 people here in the class. So today I have 2 interns, tomorrow I might need more, but the price of that internship remains the same. That will not change as per the new individual who is going to come. Right? So that is the market price that we have fixed, keeping in mind what is the kind of competitors are paying, what kind of pay structure,
एनालिसिस कितना है एंड टाइमिंग कितना डाल रहे हैं इन टर्म्स कीपिंग ऑल दोज थिंग्स इन माइंड व्हेन वी डिज़ाइन दिस थिंग, so that becomes the pricing of the job or the role that you have to play in the company. अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, नाउ देयर आर लॉट ऑफ अकाउंटेंट्स हु आर देयर इन ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट द सीएस, नॉट द फाइनेंशियल एनालिस्ट, बट प्लेन अकाउंटेंट्स जिनका काम क्या होता है, मैनुअल चालान्स बनाना, बैंक जाना, छोटे छोटे काम बहुत सारे, राइट, एक्सेल शीट पे कुछ चढ़ा देना, टैली पे थोड़ा बहुत काम कर देना, बहुत बेसिक काम करते हैं अकाउंटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये देखा जाता है, ऑलमोस्ट इन माई एंटायर करियर ऑफ 20 years आई हैव सीन दैट many accountants don't change job frequently. Also they do not have any kind of motivation to study higher. पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते हैं उससे ज़्यादा, उसी लेवल पर रहना चाहते हैं। जनरली दे आर बेसिक BCom graduates. Now what happens with these people is उनका काम भी डे टू डे चेंज नहीं होता, but because they are handling money, so they become very loyal for the organization. And organization also keep them happy and in the organization for longer term period because everything is related to money. So आपकी integrity, honesty, loyalty उसके basis पर आपको पैसा देते हैं. So every year the raise will happen, but the raise will happen keeping in mind the inflation in mind only, not the performance. Because you are performing an average job every day over a period of time. तो चाहे आपको 15 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, लोग अपनी कंपनी से रिटायर हो जाते हैं अकाउंटेंट की पोजीशन से ही, क्योंकि कोई और पोजीशन है नहीं उससे ऊपर देने वाली। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी क्या कहती है, छोटे जूनियर आ जाते हैं, तो एक को जूनियर अकाउंटेंट, एक को सीनियर अकाउंटेंट, बट स्टिल दैट रोल रिमेन्स द सेम. So in such things what happens is कि pricing of the job does not change over a period of time, but because the employee has remained in the organization and inflation is changing, market is changing, cost of living is changing, that's why we keep giving them a little raise every year. So on that basis also pricing of the job is also fixed कि आपका कितना contribution है वो, right? Ma'am, what is the difference between pricing of the job and the pay structure? Pay structure is basically the complete structure in which you are paying to these, all the components that goes into. So your HRA is part of it, your conveyance is part of it, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. We will come to that. I'll show you that Excel sheet. Right? और pricing of the job is कि total cost कितना जाना चाहिए. So pricing is the Suppose collection of pricing is, हाँ correct, collection of everything. So suppose pricing says that 20,000 रुपये पर मंथ का प्राइस है. अब उसको आप कैसे कैटेगरी में डाल रहे हो, कौन कौन से कैटेगरीज में डालकर उसको दे रहे हो, ESI का कंपोनेंट्स कितना, PF का कितना, HRA कितना जा रहा है, HRA इज हाउस रेंट अलाउंस, बेसिक सैलरी कितना जा रहा है, अलाउंस कितना जा रहा है, इंसेंटिव कितना जा रहा है. 20,000 को आपने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके देनी है. Now this categorization also can only happen as per the rules and laws and legalities. It cannot happen just because you want to do it. There are rules again you have to follow for the pay structure to be used. Okay. Yeah. फिर आ जाता है last point same compensation revision. If you are not happy with any of the part, the organization feels that there is a time and we have to change it. कुछ भी हो गया, जैसे कोरोना के बाद नाउ आफ्टर 2 years organizations are opening properly. We are anticipating that 2020 April onwards, which just started, everything will go smoothly as it was pre-corona time. So now organizations are again thinking of revising the compensation. Huge change has been seen in the market in last 6-7 months. जहाँ एक IT वाले को 13-14 लाख रुपए मिल रहे थे, now that person is asking for 30-35 lakhs. डायरेक्टली ऊपर आके बोलते हैं, और उनके पास ऑफर होते हैं ऑलरेडी 27 लाख 30 लाख किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन. सो दे नो द वर्क, दे नो दिस इज देयर टाइम टू कैश ऑन टू द रिक्वायरमेंट्स, दे नो दे आर नीडेड बाय ऑल द टॉप कंपनीज एंड दे आर बीइंग पेड फॉर द वर्क. चाहे वो कंपनी सिर्फ उनको रखे, ऑल बिग कंपनीज आर वॉट दे आर डूइंग कि प्रोजेक्ट्स नहीं आए हैं उनके पास अभी, बट दे हैव स्टार्टेड हायरिंग पीपल. 30-30 लाख रुपए एम्प्लॉय को दे रहे सिर्फ बेंच पे बैठने के लिए, खाली बैठने के लिए. 6 months, 7 months, 8 months, they keep paying all these people the salaries just to ensure कि वो हमारे पास ही रहे. These people should not move out and go to another organization because they are that skilled is that valued in the market right now. So suddenly things like this can also change the way the compensation is being paid.
Industry wise, we have to again do the survey, we have to see what the kind of market is, and then we start giving the salaries. So बहुत सारी चीज़ें impact करते हैं short term और long term में, that we will have to keep in mind. Now compensation system दो parts में divide हो जाता है, एक indirect compensation और एक direct compensation. Compensation की जगह आप remuneration word भी use कर सकते हो. Many organizations use remuneration also as an interchangeable. Let's talk about direct compensation first. So direct compensation is basically the base pay that you get, which is generally in the language of law it is known as basic pay. Basic pay दो type की होती है, एक salary और एक wage. Wages generally are paid on daily basis और weekly basis. इंडिया के अंदर वीकली बेसिस सिस्टम नहीं इतना प्रेवलेंट है. इट इज़ ईदर डेली वेजेस विच इज़ पेड टू द लेबर्स हु आर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल जनरली. सैलरीज आर बीइंग पेड टू द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्लास पीपल हु जॉइन. फिर आ जाता है इसी के अंदर डायरेक्ट कॉम्पनसेशन में मेरिट पे. मेरिट पे इज बेसिकली द फिक्स्ड पार्ट द फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ इट, that if you provide higher to the organization you will be paid higher, or if you are from a very good institution you will be paid higher. So all that merit pay is purely on the basis of your qualification, your extra experience, whatever extra you bring to the organization, which is not mentioned in job analysis. फिर आता है इंसेंटिव पे. इंसेंटिव पे कैन बी बोनस, कमीशन, हर पीस पे. जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि अगर आपको टारगेट दिया गया है 10 पीस बनाने का एक दिन में, आपने 12 पीस बना दिए, तो आपको उसका इंसेंटिव ज़्यादा मिल जाएगा. दैट हैपन्स इन द डेली वेजेस. फिर प्रॉफिट शेयरिंग. कंपनी अगर प्रॉफिट बना रही है सो देन द कंपनी शेयर्स द प्रॉफिट विद देयर एम्प्लॉयज. किसी को 2% प्रॉफिट शेयरिंग पे रखते हैं, किसी को 10% पे, डिपेंडिंग अपॉन what critical role you are playing in the organization and again how valued you are for the organization. Stock options we discussed. Equity कितना है organization का और कितना आपको long term के लिए वो motivate करके अपने पास रखना चाहते हैं. So they offer stock options of the employees की free में shares दे देते हैं organization के, so that you can utilize them later on. And then shift differential. Shift differential क्या होता है कि some people work in graveyard shifts. Graveyard shifts are generally night shifts purely, जिनका टाइमिंग ही रात को 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का होता है. सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ए शिफ्ट. दैट्स वाई द शिफ्ट डिफरेंशियल इज बीइंग पेड टू दोज एम्प्लॉयज ओनली who choose to work in this shift or they have to work in these shifts. It can happen in manufacturing industry, it can happen in call centers, it can happen in IT industry where they are provide servicing to the customers outside India. एक और इसका पार्ट है डेफर्ड पे. डेफर्ड पेज आर बेसिकली योर सेविंग प्लान्स. मैनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफर दैट ऑल्सो एज द पार्ट ऑफ द रिटेंशन स्कीम. कि सेविंग प्लान्स खरीद के दे दिए बैंक्स के या कहीं और ऑर्गेनाइजेशंस के या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस के. स्टॉक परचेज करने में उनकी हेल्प करते हैं कि उनको सब्सिडाइज रेट पे स्टॉक्स दे देते हैं. एक तो इक्विटी ऑप्शंस होता है, स्टॉक ऑप्शन जो फ्री मिलता है. एक स्टॉक परचेज के अंदर जहाँ सब्सिडाइज रेट पर उनको दे दिया जाता है. Then annuity. Annuity is basically when you retire from the organization, so they help you get a good chunk of money which they keep in the saving for the organization. It is also called superannuation plan. So superannuation में क्या होता है कि every organization create a fund. Not every, most good organizations create a fund within the organization अपने trust के नाम पे, and then a small amount of your salary goes into that. स्मॉल अमाउंट ऑफ, जैसे सेम प्रोविडेंट फंड का रूल होता है कि कुछ अमाउंट आपकी तरफ से या कुछ एम्प्लॉयर की तरफ से. सिमिलर थिंग विल हैपन इन द एन्युटी. सुपर एन्युएशन स्मॉलर अमाउंट कैन गो इनटू, एंड देन व्हेन यू आर रिटायरिंग यू रीच द एज ऑफ 60 you get that huge chunk. Many organizations have stopped superannuation because it gets difficult. Now people are changing the jobs very frequently. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अभी भी चलता है, अच्छे या सेमी गवर्नमेंट में अभी भी चलता है, but many private organizations have stopped doing that until unless they know कि people are going to stay for longer period of time, because otherwise कोई फ़ायदा नहीं होगा. अगर आपने रिटायरमेंट एज तक उतना ही नहीं है, आपका वो पैसा जो आप जमा कर रहे हो इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑफ यूज. तो ये आपका हो गया डायरेक्ट कॉम्पनसेशन. डायरेक्ट कॉम्पनसेशन आर जनरली मॉनिटरिंग, सब पैसे से लेना देना, ओनली मॉनिटरी टर्म, फाइनेंशियल टर्म्स. Then आता है indirect compensation. Indirect compensation is divided into 3 parts. One is your protection program. Second is your pay for time which you have not worked.
and then services and prerequisites which is required. So we'll talk one by one. So protection programs are, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस दे दिया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने आपको प्रोवाइड करा दिया, अगर जॉब के टाइम पर आपको कुछ डिसेबिलिटी हो गई है तो कॉम्पनसेशन एक्ट के अंदर डिसेबिलिटी इनकम दे दिया, और दैट इनकम विल गो ऑन फॉर एवर, इट विल नॉट जस्ट बी वन टाइम, or the amount would be that huge that it will take care of your family for a longer period of time. पेंशन हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, राइट. देन पे फॉर टाइम नॉट वर्क के अंदर आ जाता है, आप वेकेशंस लेते हो व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, स्टिल यू गेट पेड, बिकॉज देयर इज अ लीव पॉलिसी इन प्लेस, देयर इज अ वेकेशन पॉलिसी इन प्लेस. देन हॉलीडेज दैट यू गेट, Sundays are holidays, and there are other holidays, approximately 12 to 15 holidays that fall in India, so you get paid for those holidays also. Sick leaves again are part of it. So as per government rule, there is a minimum 6 or 7 days of sick leave. Generally हर state का 6 या 7 ही है, that has to be paid to every employee in a year's time. So that 6-7 days you have to give, and employee can consume it in any point in time without even informing कि हम sick हो गए, आने के बाद भी inform कर सकता है. Again that rule of information and not information can differ from company to company. Some companies are strict कि अगर आप वो ले रहे हो sick leave और आप बीमार हो, so at least you can text or WhatsApp, because now technology is changing, so it is easier. पहले के टाइम में difficult होता था. Then outside India में jury duty is very important, so you cannot deny the jury duty, right? कि बहुत सारे वहाँ पर अभी भी जो लीगल सिस्टम है वो यही चलता है कि बहुत जूरी को आप बुला सकते हैं, एंड देन द जूरी विल टेक अ फाइनल डिसीजन ऑन द कोर्ट केसेस, सम कोर्ट केसेस, राइट. सो इफ़ यू आर कॉल्ड फॉर जूरी ड्यूटी, देन इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉय टू सेंड दैट पर्सन वेदर इट इज़ ऑन द जॉब और नॉट, राइट. सो वो हमारे इंडिया में नहीं चलता है, पहले होता था, नाउ इट्स नॉट है, क्योंकि अब जूरी वाले केसेस का ही नहीं रहता. थर्ड आ जाते हैं सर्विसेज एंड प्रीक्विजिट्स, दैट इज दैट यू नो एक्स्ट्रा सर्विसेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग, विच इज़ बेसिकली द बेनिफिट्स पार्ट ऑफ इट. सो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ कि आपको दे दिया, आपने पेड वेकेशन गिफ्ट कर दिए अपने एम्प्लॉय को, बिकॉज यू वांट टू कीप दैट एम्प्लॉय फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यू नो दैट पर्सन इज रियली रियली वैल्यूएबल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. सो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ में इट कैन बी एनीथिंग, वेकेशन पे भेज दिया, क्लब मेम्बरशिप्स दे दी, अच्छे अच्छे चीज़ों की मेंबरशिप्स दे दी, एनीथिंग, यू नो, आपने उनके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसे दे दिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के कार चाहिए, हाउस चाहिए, उसको सब्सिडाइज रेट पे हाउस लोन दे दिया. सो दीज आर बिकम्स रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ बाय द कंपनी फॉर देयर पीपल. देन कार दे दी. बहुत सारे जॉब्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप जनरल मैनेजर से ऊपर चले जाते हो या सीनियर मैनेजर से ऊपर चले जाते हो, तो यू आर प्रोवाइडेड बाय कंपनी कार डायरेक्टली. Right, a driver in a car will always be there. Many private organizations also follow. Government में तो होता ही है. Then financial planning. The organizations help you in designing your financial plans. That where you should invest your money properly. So they hire people like HEMA in the organization just to keep things going in place. कि investments के लिए कहाँ कितना फ़ायदेमंद है, financial planning कैसे करना है. All these things they help so that you know employee can become that educated in terms of where to invest that money. अब आपको 2 करोड़ रुपए का पैकेज मिल रहा है पर एनम, 2 करोड़ कैन नॉट बी योर खर्चा पर एनम, राइट. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज एक बार लाइफ सेटल हो जाती है, घर बना हुआ है, गाड़ी है, सब कुछ है आपके पास, और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तब भी 2 करोड़ रुपए का खर्चा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एवरी ईयर. सो व्हाट कंपनीज डू इज दे से दैट यू कीप 50 lakhs out of this 2 crore to the company. We will help you invest that money in a better things. Can be stock options or it can be anything extra. Property खरीद देते हैं आपके नाम से, कुछ भी कर सकते हैं. So you know company help you in providing that assistance. Then low cost or free meals. छोटी छोटी चीज़ें हैं, हर कंपनी में होती हैं. Either they have their own cafeteria, they provide free meals, coupons, so that you can utilize them. So Sodexo coupons सुने होंगे आप लोगों ने, तो Sodexo coupons ऐसे ही बहुत सारे coupons आते हैं, वो आपको दे दिए जाते हैं. And Sodexo coupon can be exchanged in Big Bazaar, lot of malls also. वहाँ पे change करके आप उसके बदले में कुछ भी खरीद सकते हैं. So that can also happen. Right? So these are 2 ways of giving compensation, direct and indirect. Payroll system. This is purely about softwares, how softwares work. So just to give you a brief idea about that. So different तरीके के होते हैं.
तो HR पेरोल सिस्टम के अंदर वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉय लीव मैनेजमेंट सिस्टम। कितनी छुट्टियाँ हर एम्प्लॉय ने ली हैं, क्योंकि दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर थिंग। अगर आपका लीव एज पर द पॉलिसी जा रहा है, उससे ओवर नहीं जा रहा है, दैट मीन्स यू विल बी पेड फॉर दोज लीव्स। बट इफ इट इज़ गोइंग, जैसे सिक लीव, 3 तरह के लीव्स होते हैं जनरली कॉम्पनसेशन में जो कैलकुलेट होते हैं, सिक लीव, प्रिविलेज लीव और अर्न लीव्स ऑल्सो उनको हम कहते हैं, एंड थर्ड इज कैजुअल लीव्स। सो स्टेट वाइज इनके रूल्स अलग अलग हैं। अगेन इट्स अ मैंडेट टू गिव दीज 3 काइंड ऑफ लीव्स, बट स्टेट गवर्नमेंट्स इसको फॉलो करवाते हैं, सो इसीलिए स्टेट वाइज इनके रूल्स थोड़े से चेंज होते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कहीं कहीं पर हो जाता है। जैसे दिल्ली में इट्स कंपल्सरी दैट 7 sick leaves, 6 or 7 sick leaves should be given to every employee per year. Earned leave is calculated every 20 days of work that you have put in the organization. So for every 20 days you will be paid 1.75 leaves per month. Right? So this is how it is calculated. अब ये दिल्ली का है, दिल्ली के बाहर का अब जैसे ही हम हरियाणा पंजाब एक्ट में आ जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, वहाँ थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं। वहाँ सिक लीव्स हैं 6 फिक्स्ड, कैजुअल लीव्स हैं अगेन 6 फिक्स्ड, एंड प्रिविलेज लीव्स आई थिंक 12 फिक्स्ड पर एनम, per month 1 leave. So 0.75 leaves every 20 days. So this is how. So थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे change है state wise. So you need to know when you are in which state from where your corporate office is performing this job. Right? So employee leave management system is a payroll system which is available in market. It helps you take care of the leave policy calculation easily. आपका वन टाइम सरदर्दी है कि आपने सारे एम्प्लॉयज़ के नाम फीड कर दिए, अपनी लीव पॉलिसी के रूल्स फीड कर दिए, दैट्स ऑल। देन कैलकुलेशन कब कौन कितनी लीव ले रहा है ऑटोमेटिकली अटेंडेंस सिस्टम से इसके अंदर आ जाता है। राइट, सेकेंड इम्पॉर्टेंट इसके अंदर होता है एम्प्लॉय अलाउंस सिस्टम। अलाउंस मैनेजमेंट सिस्टम इज बेसिकली द नंबर ऑफ पीपल हु आर रिक्वायर्ड टू ट्रैवल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको ट्रैवल अलाउंस के लिए कितने पैसे मिल रहे हैं, आप अगर बाहर जा रहे हो बार बार बिकॉज योर जॉब रिक्वायर्स दैट। तो सेल्स एंड मार्केटिंग पीपल, जनरली लॉजिस्टिक्स पीपल, दी पीपल ट्रैवल अलॉट। तो इन लोगों का थोड़ा सा अलाउंस मैनेजमेंट सिस्टम वुड बी डिफरेंट देन पीपल हु आर इन फाइनेंस एंड HR, बिकॉज दे जनरली डोंट ट्रैवल दैट मच फॉर ऑफिशियल वर्क। फिर आ जाता है आपका लोन टर्म्स एंड कंडीशन। सो अगर आपने लोन लिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही, तो उसके अंदर भी आपको ये सिस्टम हेल्प करता है देखने में कि हर मंथ आपकी सैलरी से कितना कट रहा है उस लोन का। राइट, तो सपोज आपके घर में शादी आ गई, यू आर एन एम्प्लॉय वर्किंग फॉर लास्ट 5 years, नाउ यू वांट टू गेट मैरिड योर सन और डॉटर, सो यू टेक एन एक्स्ट्रा 5 लाख रुपीज़ फॉर कंपनी एज अ लोन। और वो 5 लाख रुपये आप कितने अमाउंट अगली मंथ कटवाओगे वो इसके अंदर चला जाएगा। सो दैट लोन टर्म्स एंड कंडीशन सिस्टम विल बी पे। सम एम्प्लॉय से कि हमारा 2 साल में ख़त्म कर दो, सम एम्प्लॉय से मेरी सैलरी कम है तो 5 साल में 5 लाख रुपये उतार देंगे। उससे एक फ़ायदा ये हो जाता है, क्यों कंपनीज लोन्स देती हैं, कि एम्प्लॉय स्टेज बैक इन दी ऑर्गेनाइजेशन, रिटेंशिप बढ़ जाती है। देन रिपोर्ट जनरेशन सिस्टम बेसिकली हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द रिपोर्ट्स रिलेटेड टू एवरीथिंग, कि अगर आपकी कंपनी के CEO ने देखना है कि मुझे इस महीने का लीव एप्लीकेशन, लीव मैनेजमेंट दिखा दो लाके एक एक्सेल फॉर्मेट में या प्रिंट लाके कि कितने लोगों ने कितनी लीव ली है, उस पर गोले लगा देना कौन ज़्यादा लीव ले रहा है, दैट्स इट। So just to check whether absenteeism is really high or not. So then this report generation system helps you in taking out the reports quickly. All kind of reports. फिर employee management system होता है। Employee management system helps you keeping in mind कि कितने तरीके के एम्प्लॉय हैं कंपनी के अंदर, रेगुलर एम्प्लॉय, फुल टाइम एम्प्लॉय, पार्ट टाइम एम्प्लॉय, कंसल्टेंट्स, सबके बारे में, सबके रूल्स क्या हैं पे स्ट्रक्चर के हिसाब से कितना पैसा जाना चाहिए, एंड ऑल द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू एम्प्लॉय, किसका क्या क्वालिफिकेशन है, किसने एडिशनल क्वालिफिकेशन बाद में लिया, कितना एक्सपीरियंस है, डेमोग्राफिक्स क्या है। सो एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन गोज इन टू एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ लीविंग, डेट ऑफ जॉइनिंग, सो मैनी थिंग्स कैन कम आउट ऑफ दैट। राइट, फिर आता है आपका अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, वेरी इजी। अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम जनरली बायोडाटा उससे होता है रिलेटेड, तो आपने सिर्फ अपना थंब इम्प्रेशन दिया या आई सेंसर से ले लेते हैं आजकल, या फेस सेंसर से ले लेते हैं, मशीन के सामने आप गए, दैट अलाउज यू कि आप आ जा रहे हो ड्यूटी के अंदर। राइट, सो सबके, सो दैट कैलकुलेट्स योर अटेंडेंस ऑटोमेटिकली।
फिर एम्प्लॉय TADA आपका ट्रैवल अलाउंस का मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेली अलाउंस का मैनेजमेंट सिस्टम, कि आपको कितना डेली अलाउंस मिलता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। क्योंकि बहुत लोग जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल्स पे ना MRs एंड एरिया सेल्स मैनेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कम एंड सिट इन दी ऑफिसेज। उनका काम ही नहीं है, उनको सुबह आना है अटेंडेंस लगा के एंड देन दे हैव टू बी आउट इन द मार्केट। तो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर में एक ही सिटी के पास भी जाने से उनको GA और DA दोनों मिलता है कि डेली उनका अलाउंस कितना खर्च हो रहा है, ऑटो पे ले रहे हैं, बाइक पे ले रहे हैं, पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, वट एवर वे दे आर डूइंग। सो दैट्स देयर एम्प्लॉय TADA सिस्टम। Then overtime management system talks about that people who are putting more time in the organization than the required time. So as per the rules by the law, 48 hours, 40 to 48 hours for 6 days in a week you have to give to the organization, right? Not more than that. इसीलिए 8 to 9 hours कैलकुलेट होता है। 9 hours तो कंपनीज कैलकुलेट करती है पर डे का आपका, उसमें 1 घंटे का ब्रेक भी कैलकुलेट होता है। सो इट इज़ मैंडेट बाय द गवर्नमेंट दैट एटलीस्ट 1 hour ऑफ रेस्ट और लंच ब्रेक एवरी एम्प्लॉय शुड बी गेटिंग। So usually it's 8 hour shift, 1 hour is extra because आप ब्रेक ले लेते हो, आधा घंटा लंच का ब्रेक, 10 मिनट कॉफ़ी ब्रेक, टी ब्रेक, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेक्स। तो उन सबको कैलकुलेट करके 9 hours every day. So if somebody is putting more than 9 hours, it becomes overtime. Overtime के रूल्स हर कंपनी के अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन किया जाता है। सो देन लास्ट में आता है आपका पेरोल सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम। सो पेरोल सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ ये सारी चीज़ों का कोलैबोरेशन हो रहा है, बिकॉज ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी सैलरी से लिंक्ड हैं। कितना सैलरी आपको पर मंथ मिलने वाला है, ये सबसे उससे रिलेटेड है। तो दैट सेंटर मैनेजमेंट टेक्स केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इन सब से रिलेट करके कोलेक्ट डेटा कर लेते हैं फ्रॉम वेयर योर सैलरी इज रिलीज्ड, कैलकुलेटेड एंड रिलीज्ड, राइट। फिर 4 फंक्शंस है कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट के, जनरली हमने कवर कर लिए हैं, बट जस्ट टू गिव अ लिटिल मोर आइडिया आई टेल यू। सो द इक्विटी फंक्शन टॉक्स अबाउट कि आपका पेमेंट शुड बी इक्वल एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। दिस टेक्स केयर ऑफ दिस फंक्शन ऑफ कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट टॉक्स अबाउट दैट एवरी एम्प्लॉय हु इज वर्थ समथिंग शुड बी पेड इक्वली, no gender differentiation, no DNY differentiation, nothing like that, correct। then आता है next आपका the welfare function। so welfare function where you are taking care of employee in terms of this employee is really valuable for the organization। तो उनका सिक्योरिटी, सेफ्टी, जैसे हम मैस्लोज हायरार्की की बात कर रहे थे, many compensation systems are based on Maslow's hierarchy system also, right? कि किस तरीके से आपकी सैलरी लेवल्स पे कवर करना जाता है। जनरली यू नो द कंप्लीट वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय इज टेकन केयर ऑफ। तो सपोज अ पर्सन इज वर्किंग एज अ मैनेजर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो मैनेजर है तो मैनेजर के चांसेस है कि वो जनरली 30s के अंदर होंगे, राइट। अब 30s में कोई है तो मैरिड होगा, फैमिली होगी, चांसेस कि किड्स भी होंगे। So now welfare function says that the compensation should be that much that he or she should be take care of their family also. So that is how companies can collaborate or companies can contribute towards the benefit of the human being who is working for them. Motivation function क्या कहता है? That you should pay that much of salary which motivates the people, right? So now अब जैसे you are 7 people here. Now 7 people will have different motivation system altogether. Not necessary अगर सृष्टि को 10,000 रुपये मोटिवेट करते हैं तो अधिरिचा को भी 10,000 ही करेंगे। She might need 30,000 rupees for motivation. So other than salary, that is the reason why many organizations introduce incentives for flexible structure so that your motivation functions is also taken care of. That if you really looking after कि मुझे 10,000 every month extra मिलना चाहिए, so then you put that extra effort, right? Then retention function। तो retention function के अंदर आपके generally सब benefits आ जाते हैं जो आप employee को देते हैं, just to ensure that they stay with your organization for longer period, because you are paying them for their loyalty and integrity in the organization, not just for their performance, right? So that is called retention function, right? You are creating that kind of components which is taking care of their retention in the organization.
Now, how do we know whether compensation structure that we have designed for the organization is really effective or not? Right? I am not going to read it out. Any one of you can read it out. Hima, you can do that. 2-3 points you read, then rest Prachi can read. Scrutinize the market survey and develop compensation plans. Keep in view the competency and span of control depending upon the size, technology used, and product or service lines. पढ़ो मत सिर्फ साथ साथ एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करो. Just try if you can explain also. The compensation. So number 1 is saying that you need to scrutinize the market survey and develop compensation. So what do we mean? What does it mean? We have to compare the competitors. Right. See market prices, how others are pricing, and develop in our organization the plan according to competitors and market related. We have to develop plan. Absolutely. Not just competitors, but also keeping in mind हर साल जैसे government policy change हो जाती है. Like you are aware कि हर साल जब budget आता है, there are certain things which changes. Okay. So if that changes also, you try to bring those changes in organizations as well, side by side. That is the reason जो government का financial end होता है 31st March, many companies also end their financial year at that time, because जो भी budget में changes आते हैं, they can incorporate. वैसे इनकम टैक्स में बहुत चेंजेस हो जाते हैं हर साल. कितने स्लैब की इनकम पे कितना टैक्स होगा. तो पहले 5 लाख तक का भी फ्री कर दिया था, और नाउ दे हैव इंक्लूडेड सम अमाउंट ऑफ टैक्स ऑल्सो ऑन दैट. तो हर साल कुछ चेंज कर देते हैं गवर्नमेंट के बेसिस पे. राइट. सो दैट मीन्स मार्केट स्ट्रैटेजी को, सर्वे को स्क्रूटिनाइज करना हमारा रोल है. यू हैव टू कीप इन माइंड एज एन HR कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं. और लेबर लॉज वाले कभी भी चेंज कर देते हैं. बहुत सारे स्टेट में लेबर वेलफेयर का पैसा लगता है 10 रुपये पर मंथ. दैट्स अ फंड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू पे एवरी एम्प्लॉय के नाम से. अब 10 रुपये है, कई बार वो एकदम से चेंज कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं कि नहीं देने की ज़रूरत है. सिमिलरली सम स्टेट हैज़ अ प्रोफेशनल फ़ी 200 रुपीज़ जो जानी चाहिए. सम स्टेट डू नॉट हैव दैट. सो एज एन HR मैनेजर यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज आपके चांसेस ये हैं कि आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होंगे जो अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हैं. सो उन पर स्टेट रूल अप्लाई कर रहा है, या उन पर कॉरपोरेट जहाँ पर आपकी कंपनी है वहाँ पर रूल अप्लाई कर रहा है. दैट यू हैव टू सी एंड देन डिज़ाइन योर डेवलपमेंट compensation plan. Correct? Yes. Now, second point. Keep in view the competency and span of control depending upon the size, technology used, and product or service lines. Right? अब इफेक्टिवनेस और कैसे करेंगे हम मैथ आपकी कॉम्पिटेंसीज पे. एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स सम पीपल, आप लोगों में से जिन्होंने क्लासेस अटेंड की है बेसिक मैनेजमेंट की, उनको पता होगा स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है. जिन्होंने नहीं किए वो अब करेंगे. यू विल गेट टू नो. सो स्पैन ऑफ कंट्रोल इज बेसिकली व्हाट आर द थिंग्स यू आर हैंडलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. How many people reporting into you, what designation, what role, critical, non-critical, what exactly the level of you. Not designation wise level, but value by role that you have to play in the organization, right? Competencies you all know. So अगर आपकी same level पर competency में भी difference है, that means your salaries can differ from each other. Third point. Focus on contributions and a collaborative approach rather than job content. तो सिर्फ जॉब के कंटेंट पे नहीं जाना है. गुड कॉम्पनसेशन प्लान्स टेक्स केयर ऑफ योर कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. दैट जॉब के अंदर तो आपका ये कंटेंट लिखा था, जॉब एनालिसिस में ये 4 चीज़ें लिखी थी, पर उन 4 चीज़ों को करने के लिए आपने क्या क्या एफर्ट्स डाले, दैट कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी गेट पेड. राइट. जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि VP के साथ हमने एक वो लेना है अपॉइंटमेंट, किसी और कंपनी के नहीं मिल रहा. अब वन रास्ता इज, जैसे नामिका ने कहा, वी विल गो बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड से कि वो हमें टाइम नहीं दे रहा है. राइट. सेकेंड रास्ता इज दैट टू फाइंड आउट द वेज, कहाँ से उनको कैसे पकड़े और कैसे मिल लें और काम निकाल लें.
वो काम नहीं भी निकले, एटलीस्ट यू ट्राई एंड फाइंड वेज टू मीट दैट पर्सन once so that they know what you are, what your company is doing. So this much you have to do. So these contributions or these extra efforts to do your job also is being paid by the organization. बहुत सारे तरीके से छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दे देते हैं, छोटे छोटे कॉम्पनसेशन, सॉरी नॉन मॉनिटरी कॉम्पनसेशन दे देते हैं, पीठ पे थपथपाना भी इट्स अ वेरी गुड रिकग्निशन दैट यू जनरली गेट इन द ऑर्गेनाइजेशन. सर्विस अवार्ड्स दे देते हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं जो आप कर सकते हैं कंपनी के अंदर. वी टॉक अबाउट दैट टुमारो. Then fourth point is prepare the roles and responsibilities in line with compensation. Right? Factors like आपकी competence कितना है, आपका experience कितना है और आपके personality के attributes कितने हैं. Right? अब किसी को आपने HR में डाल दिया पर उसका employee से या लोगों से बात करने का ही मन नहीं करता है, ऐसे employee can be successful in HR? No, ma'am. Right? Chances are very very difficult. फिर उनको back end वाला काम दे दो जिसमें वो सारा दिन computer पे बैठ के कुछ करते रहो. Right? But as a successful human resource person, they won't be able to flourish. So it's really important that when you are finalizing roles and responsibility, you need to keep their personality attributes also in mind, other than their competency and experience. Next are they keep and watch on changing patterns and changing expectations of the employee. Same thing. अब जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया कि बिफोर यू आर मैरिड आपके लाइफ गोल्स अलग रहते हैं. Right? You want to enjoy your life. पैसे आ रहे हैं, you want to travel, you want to see the things. Lot of things can differ. Once you get married, you want a little security and safety. Because now you want to buy a house, you want to buy a car, you want to get the best of the things. फिर बच्चे हो जाते हैं, so then you want some more security. That extra amount आना चाहिए so that you can pay for education, you can take care of their things, you know. But your level of living should not go down. ऐसा नहीं होना चाहिए कि शादी कर ली, बच्चे कर लिए पर पैसा उतना ही मिल रहा है. सो ऑब्वियसली एक पर्सन का पैसा 4 लोगों में डिवाइड होने लग गया है. सो दैट इज गोइंग टू बी एन एक्स्ट्रा कॉस्ट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑर्गेनाइजेशंस कीप इन माइंड दैट हाउ एम्प्लॉयज आर चेंजिंग, हाउ देयर पैटर्न्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सम एम्प्लॉयज विल से दैट उनको मनी इज नॉट रियली द मोटिवेशन फैक्टर. फॉर देम द हाइएस्ट मोटिवेशन फैक्टर इज अ चैलेंजिंग जॉब and a good manager, मतलब जिसको वो रिपोर्ट कर रहे हैं. These two conditions become much more important, and over a period of time ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होने लगता है. So that is basically your patterns which are changing, that you are no more required to work only for money, but the kind of challenge, the kind of innovation job needs. That's why you will see a lot of shift has happened in last 5-7 years where people are leaving corporate jobs and joining startups. क्योंकि स्टार्टअप्स में पैसा इनिशियली कम मिलता है बट वर्क इज़ सो चैलेंजिंग दैट इट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है किसी चीज़ को बड़ा करने के लिए. नेक्स्ट आता है डिज़ाइन मोर ट्रांसपेरेंट एंड मेजरेबल परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम. दैट इज़ वाई वी कीप सेइंग दैट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, chances are that compensation management also will not be understood properly. Because जितना परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम कंपनी टू कंपनी, किस कंपनी के अंदर कौन सा सिस्टम डालना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि आपका कल्चर क्या है. नॉट एवरी कंपनी विल बी एबल टू सक्सेसफुली वर्क ऑन बैलेंस स्कोरकार्ड. राइट, यू नीड टू, बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड. उनके सारे सिस्टम इतने अच्छे होने चाहिए कि उन सबको क्वान्टिफाइबल कर सकें. अदरवाइज इट गेट्स डिफिकल्ट. अगर कंपनी का स्कोर कार्ड नहीं होगा, फंक्शनल स्कोर कार्ड नहीं होंगे, तो एम्प्लॉय बैलेंस स्कोर कार्ड भी काम नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो एज पर द कल्चर ऑफ द कंपनी, एज पर द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड टू सी एंड क्रिएट ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस सिस्टम, क्लियरली मेजरेबल. 5 नंबर अगर नहीं आए किसी एम्प्लॉय के तो उसको 5 में से 100 रुपये की सैलरी नहीं मिलेगी, उसको 90 ही मिलेगी. 3 आए हैं तो 70 ही मिलेगी. ऐसे क्लियर सिस्टम होना चाहिए. क्लियर मिलेगी मतलब हायर जो आपका अप्रेजल मिलेगा वो इस लेवल पर मिलेगा. राइट, सो यू हैव टू हैव वेरी क्लियर ट्रांसपेरेंट सो दैट इट कैन बी सीन और इट कैन बी अंडरस्टूड बाय इवन द बेसिक पर्सन हु इज जॉइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन. लास्ट आ जाता है आपका पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ कॉम्पनसेशन पॉलिसी प्रोग्राम्स. ये हम बार बार रिपीट कर चुके हैं प्रोसेस में भी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप रिपीटिंग and changing the entire thing over and over again
हर बार रिव्यू करते रहो, देखते रहो सक्सेसफुल है या नहीं है. कैसे रिव्यू करेंगे? एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे इज़ वन एग्जाम्पल. Keep taking employee satisfaction survey, keep asking indirect questions whether they are happy. Direct पूछोगे if they are happy with their पैसा or not, salary or not, everybody will say no. So money can never satisfy. But indirect questions you can design and ask different kinds. अब जो हम पे स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, कॉम्पोनेंट्स की, these are the structures generally in organizations. One is your gross salary, net salary, allowances and prerequisites. Again, gross salary is divided into 4 parts. Basic salary, कितना अमाउंट जाएगा उसके अंदर. HRA मतलब आपका हाउस रेंट अलाउंस कितना जा रहा है. हाउस रेंट अलाउंस विल ओनली गो टू पीपल हु हैव नॉट टेकन होम लोन्स और people who claim that they are on rent. And other allowances. Other allowances can be conveyance, medical 1500 रुपये पर मंथ गवर्नमेंट ने फ्री किया हुआ है, सो दैट कैन बी गिवन. सो टोटली डिपेंडिंग अपॉन कहाँ से गवर्नमेंट के रूल्स आते हैं, उसके बेसिस पे आपने अपना ग्रॉस सैलरी बना लिया. सो दिस मच अमाउंट ऑफ सैलरी विल कम एवरी मंथ. नेट सैलरी क्या होती है? बेसिक सैलरी के साथ ये सारे अलाउंसेस माइनस इनकम टैक्स माइनस पीएफ. एंड अगर जिस स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स लग रहा है वो 200 रुपये वाला वो माइनस हो जाएगा. राइट. तो ग्रॉस सैलरी आपका नेट सैलरी से अलग कैसे होगा कि ग्रॉस सैलरी के बाद नेट सैलरी के अंदर अब डिडक्शंस लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपकी इनकम उस लेवल पर आ रही है. कितना इनकम टैक्स बन रहा है? 10 लाख तक है तो 10%, 10 से ऊपर है तो 15%, उससे ऊपर है तो 30% है इनकम टैक्स. राइट. दैट अगेन यू कैन रीड अबाउट इट इन डिटेल्स इन इनकम टैक्स लॉ, बिकॉज ये हर साल चेंज होते रहते हैं. सो वी डोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ थिंग्स. EPF हमें पता ही है कितना कंट्रीब्यूशन जा रहा है. सो 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी इज योर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो आपके पैसे में से आपकी सैलरी से कट जाएगा बिकॉज इट्स योर कंट्रीब्यूशन. प्रोफेशनल टैक्स अगेन बिकॉज स्टेट डिमांड्स की होना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र में है 200 रुपीज़, दैट इज बीइंग डिडक्टेड इन योर सैलरी पर मंथ. फिर आ जाते हैं अलाउंसेस. अलाउंसेस किस किस नाम से होते हैं? अगेन HRA इज अलाउंस विच इज हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस. LTA is basically paid by organization. Once in 2 years you can claim free of cost. ऐसी आ जाते हैं. Yes, please. Ma'am, when allowances are already included in gross salary, then why is it being shown separate? Just to give you explanation about it. So allowances or fringe benefits are part of your salary structure CTC, but हम क्योंकि इसको elaborate कर रहे हैं, so we are showing it extra also. So there can be many more allowance. कार allowance भी देती है कंपनी. If they don't give car, so वो हर महीने आपको 10,000 रुपये दे देते हैं कि आप अपनी कार का फ्यूल भरवा लो कंपनी की तरफ से, या खरीद लो कार और उसका लोन कंपनी की तरफ से 10,000 रुपये वी विल पे. राइट. सम कंपनीज पे ड्राइवर अलाउंस कि आपको ड्राइवर रख लो, यू गिव दैट सैलरी डायरेक्टली, वी विल गिव यू दैट. सो ड्राइवर अलाउंस 15,000 20,000 वॉट एवर द कॉस्ट इज वो आ जाता है. So different kind of allowances depending upon which category or which hierarchy level you are. Some organization have policy कि education भी देते हैं बच्चों की, कुछ उसका amount भी they contribute so that they want to keep the employee happy for longer period of time. So वो भी educational policy के नाम से allowance कर जाता है. Again, allowances part can be, some are given by government like HRA, medical and LTA. के रूल्स होते हैं. कन्वेंट्स ऑल्सो सम यू कैन इंक्लूड टोटली एज पार्ट ऑफ योर बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ दी कंपनी. हियर यू कैन गेट क्रिएटिव कि आपको क्या देना है. जैसे ड्राइवर सैलरी, कार अलाउंस, ये सब चीज़ें बताएं. ये सब टैक्सेबल है, फ्री नहीं है. अगर आप इनकम टैक्स रूल फॉलो करोगे कंपनी के अंदर तो इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा एज एन एम्प्लॉय. HRA, मेडिकल अलाउंस, LTA, इन पर टैक्स नहीं देना पड़ता. दे आर फ्री. गवर्नमेंट ने भी इनको फ्री डाला है. फ्री इन द सेंस कि जो अमाउंट है उतना ही जाएगा, इसको कुछ नहीं. राइट. प्री रिक्विजिट्स कैसे हो सकते हैं? फ्रिंज बेनिफिट्स कैन बी डिफरेंट थिंग्स. फ़ोन ले लो, कार ले लो, कुछ भी ले लो कंपनी की तरफ से दैट इज़ गिफ्टेड बाय द कंपनी. प्योरली वेकेशंस ले लो, बाहर चले जाओ, आउटसाइड इंडिया प्लेसमेंट्स ले लो. सो मैनी थिंग्स दैट यू कैन ऑफर इन फ्रिंज बेनिफिट्स.
Again, fringe benefits, there are few fringe benefits. Every year changes happens. Some fringe benefits remain non-taxable, some fringe benefits remain taxable. Right? Income tax देना पड़ता है because income whatever you earn is your income. उस पर tax तो government ने decide किया, you will have to do it. You can save certain amounts of income tax purely on the basis of the savings you do. But again savings के ऊपर cap है. 1.5 लाख से 2 लाख से ऊपर आप ज़्यादा सेविंग कर दिखा नहीं सकते हो पीपीएफ के अंदर, विच इज़ प्रोविडेंट फंड, प्राइवेट प्रोविडेंट फंड जो आपका अपना खोल सकते हो, बॉन्ड्स खरीद सकते हो, LIC इंश्योरेंस खरीद सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं पैसा सेव करने के लिए भी. बट उस पर भी गवर्नमेंट ने कैप लगाया हुआ है कि 1.5 लाख से 2 लाख. आई थिंक यही है, तीनों को पता होगा. दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन. टोटल कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट, दैट मीन्स योर टोटल CTC. कॉस्ट टू कंपनी क्या है? फिक्स्ड कॉम्पनसेशन प्लस वेरिएबल प्लस बेनिफिट प्लस स्टॉक ऑप्शंस. बेसिक के अंदर क्या क्या आ गया? अब बेसिक का रूल क्या है? 40 to 50% ऑफ फिक्स्ड पे. अगर आपका सैलरी है, सपोज मान लेते हैं 10,000 रुपये, यू वांट टू राइट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन, अदरवाइज आई ट्राई एंड पुट इट ऑन नोट एंड सेंड इट टू यू. सपोज आपका सैलरी 10,000 रुपये है टोटल पर मंथ. 10,000 का 40% विल बी कॉल्ड एज योर बेसिक सैलरी. 40 और 50% कैसे डिज़ाइन करते हैं? 50% इज़ फॉर द मेट्रो सिटीज़, 40% इज़ फॉर द नॉन मेट्रो सिटीज़. दिस इज द बेसिक रूल वी फॉलो. Some organizations don't follow a rule, they can keep anything between 40 to 50%. Anything, you can keep 47%, 43%, 44%, anything between 40 to 50% as the part of fixed salary, total salary. फिर बेसिक पे में और क्या आ जाता है आपका? एम्प्लॉय फंड कॉन्ट्रीब्यूशन. कितना आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है per month, which is basically 12% of your basic pay. Right? That's again designed by government, nothing to do with anybody else. Some organization, some employees both become a party where they say हमें नहीं चाहिए provident. Some employer से कि हमें भी नहीं देना है contribution क्योंकि पैसा जा रहा है उनकी जेब से. बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, बहुत सारे पिटरम बिठाते हैं, बहुत सारी इलीगल काम करते हैं इन चीज़ों को बचाने के लिए. बहुत सारी चीज़ें CAs भी उनको सजेस्ट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ वेज कि कैसे बचाया जा सकता है. बट अल्टीमेटली इट्स अ वेरी वेरी गुड फैसिलिटी दैट इज़ बीन गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है. आई एम नॉट श्योर कि आगे जाके मोदी जी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे भी टैक्स ज़्यादा लगा दे या इंटरेस्ट कम कर दे. बट अभी तक EPF इज़ अ वेरी वेरी गुड कॉम्पोनेंट दैट कैन हेल्प यू सेव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर योर सेल्फ. बिकॉज अभी क्या होगा, 10,000 रुपये आपको हाथ में मिलना शुरू हो गया, तो EPF नहीं करता है, कुछ भी सेविंग नहीं हो पाएगी. 10,000 जेब में है, वो खर्च ही होगा किसी ना किसी तरीके से, किसी बहाने से हो जाएगा, अनलेस यू आर वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ योर सेविंग प्लान्स. EPF ensures that at least 24% of your salary is getting saved. 12 your contribution, 12 employer contribution. And the more you grow higher in the organization, chances कितना ज़्यादा वो contribution बढ़ जाता है. Right? I saw my father, he retired after 35 years serving in an organization. And when he got his employee provident fund, it was a huge chunk. We were actually surprised. Generally, he never used to share his financial things with us, but somehow it got leaked. बच्चे भी बड़े हो गए थे, so we got खुराफाती. So we got to know. And it was such a huge chunk. In 35 years, putting in service for one organization, different lifetime hierarchy, retired as general manager, तो पता चल जाता है कितना बढ़ गया आपका सैलरी के सर्विस से. So huge chunk, and he utilized that money for various things. सबको घर बना के दिया, किसी के लिए कुछ किया. So many things he did with that money. Right? So then it's a very good amount that you can save every month. So that has to be kept in mind. Then आपका फिक्स्ड अलाउंस आ जाता है. फिक्स्ड अलाउंस के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं. हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस अगेन should be 40-50% of basic pay. 40% for non-metro, 50% for metro. So suppose 10,000 अगर आपकी सैलरी है, उसका 50% आपकी बेसिक पे है, विच इज़ 5,000.
5,000 का 50% मतलब 2,500 रुपये आपका हाउस रेंट अलाउंस कॉन्ट्रीब्यूशन उसके अंदर दिखाना चाहिए टू शो इट एज अ गुड स्ट्रक्चर, राइट. Leave travel allowance, again there is no fixed amount, depending upon company to company they can design. Conveyance and transportation, as per government I think it is 1,600 per month. लास्ट ईयर तक कितना ही था, इस साल के भी मुझे शायद याद नहीं है. तो 1,600 पर मंथ इज़ नॉन टैक्सेबल, सो कंपनीज कैन इंट्रोड्यूस दिस थिंग. मेडिकल रिम्बर्समेंट अगेन 1,500 पर मंथ तक इट इज़ नॉन टैक्सेबल, सो यू कैन इंक्लूड इट इन द सैलरी. मील विद वाउचर्स, बहुत सारे वाउचर्स आते हैं, सो डेक्स ऑफ कूपन्स की तरीके से दोज वाउचर्स गिवन बाई कंपनीज आर कंसिडर्ड एज गिफ्ट, बिकॉज वो अपने कैफेटेरिया में खाना नहीं बना रहे हैं या नहीं प्रोवाइड करा रहे, सो दे गिव यू वाउचर्स इन एक्सचेंज. स्पेशल अलाउंसेज अगेन इसका कोई नाम नहीं होता है कंपनी के अंदर, मोस्ट स्ट्रक्चर्स शो इट एज स्पेशल अलाउंस. अगेन टोटली डिपेंडिंग अपॉन आपका बेसिक कितना है उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है, नो फिक्स परसेंटेज ऐसा. फिर आ जाता है आपका रिटायरेंस. रिटायरेंस क्या होते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स या सेवरेंस पे. EPF यू नो, सेवरेंस इज बेसिकली व्हेन यू लीव दी कंपनी और आपको हटा दिया जाता है या ले ऑफ कर दिया जाता है, सो द कंपनी हैज़ टू पे यू दैट मच अमाउंट. अगेन एज पर द लॉ देयर इज़ अ कंप्लीट एक्ट ऑन इट कि अगर कंपनी आपको हटाती है तो आपके नोटिस पीरियड के हिसाब से आपको उसको पैसा देना पड़ता है. अगर आपकी सर्विस बहुत ज़्यादा बची हुई है कंपनी के अंदर या यू आर वैल्यूड इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है, नॉट जस्ट 1 मंथ. कैन बी इधर 3 months और 6 months सैलरी इन एडवांस. सम कंपनीज गो टू एन एक्सटेंट, दे पे यू जब तक आपको नेक्स्ट जॉब नहीं मिल जाती है, उनको हटाना पड़ रहा है, तो दे कीप दैट इन माइंड एंड देन पे यू. मोस्टली इट इज़ 3 to 6 months. Severance. Right? Severance means that you are leaving the organization or a company is asking you to leave the organization. So that's how the structures are generally designed. Again, इसमें you can play around so many things. It is one example that we created for an organization. Please don't take this name. गलती से इसमें कंपनी का नाम आ गया है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम. कोई नाम है नहीं ऑर्गेनाइजेशन का, जस्ट XYZ company. So this is how you can create the structures. Name, डेजिग्नेशन, लोकेशन, रेट ऑफ ज्वाइनिंग, उनकी सैलरी ब्रेकअप कैसे कर सकते हैं. कॉस्ट टू कंपनी सपोज 10 lakhs पर एनम है, उसको आप किस तरीके से डिवाइड कर सकते हो. और जैसे हमने बात किया अभी कि बेसिक पे कितना होना चाहिए, तो 10 lakhs का 45% उन्होंने ले लिया, विच इज़ 4,50,000. करेक्ट. HRA उसका हाफ 50% विच इज़ 2,25,000. मेडिकल 15,000 विच इज़ 1,250 पर मंथ, नॉन टैक्सेबल था पहले, अब नाउ आई थिंक इट इज़ 1,500 पर मंथ. Special allowance 1,20,000, अगेन इट इज़ टैक्सेबल इनकम, इट इज़ नॉन टैक्सेबल नहीं होता है ये, और ये कितना भी अमाउंट हो सकता है. टेलीफोन रिम्बर्समेंट 36,000 रुपीज़. देयर यू हैव टू शो सर्टन बिल्स कि आपने कंपनी का फ़ोन या अपना फ़ोन कंपनी के लिए यूज़ किया, सो यू आर पेइंग, गेट पेड अगेंस्ट दैट. कन्वेंस रिम्बर्समेंट 75,000, 62,500, अगेन इट्स नॉन टैक्सेबल. Ex gratia paid annually, it's basically the bonus that is being paid as per the Indian Bonus Act. PF employer contribution becomes a part of the CTC. अपना उन्होंने दिखा दिया, ये आपका टोटल हो गया 10 लाख. उसमें से आपका कंट्रीब्यूशन माइनस कर दिया, और अगर लेबर वेलफेयर फंड जा रहा है 5 रुपये 10 रुपये पर मंथ, वो भी इसमें से माइनस कर दिया. तो आपकी नेट इन हैंड सैलरी कितना आया 10 लाख के पैकेज पे, 72,245 पर मंथ. ठीक है जी. दिस इज हाउ यू डिज़ाइन. इसमें से इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है, इनकम टैक्स भी डिडक्ट हो जाता है, तो उसके हिसाब से भी और सैलरी कम हो जाएगी. ESI डिडक्शन लाइक यू विल सी, इट इज़ मेंशन इन द स्ट्रक्चर बट इट इज़ नॉट डिडक्टेड. जिस एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 पर मंथ से बड़ी है, 37,500 है ना पर मंथ बेसिक. That's the reason why it's not part of the ESI. Right? Understood? So tomorrow we will do practical exercises of creating different organizations के हिसाब से some compensation structures
I'll give you real life cases, you design, and then we will see कैसे उसको proficiency कर सकते हैं. So कल का section is very important. Do attend that, right? Now these are some acts which directly have an impact on compensation management. Minimum wages act जिसके बारे में हमने बात किया. Payment of wages act कि हर महीने बंदे को तनख्वाह मिलनी ही चाहिए. That is what it is being said. चाहे कंपनी पर लॉस में है नहीं है, जब तक कंपनी बैंकरप्ट नहीं दिखाती तब तक उनको पे करना है. पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट यू ऑलरेडी नो, सर ने इसको बता दिया है. इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट सेज दैट इफ यू आर सिमिलरली क्वालिफाइड, सिमिलरली एक्सपीरियंस, यू शुड बी पेड इक्वल अमाउंट. नो कास्ट, क्रीड, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन वाला थिंग should follow here. Employees Provident Fund, and you know it, right? So I'm not going to do it. ESI again I have clearly made you understand practically कितना करता है. Payment of gratuity act is also very important. I'm sure you are aware of it, but most organization nowadays should not have it, in my opinion, because पहले के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ था जब लोग रुकते थे एक ऑर्गेनाइजेशन में 5-5, 6-6, 10-10 साल. अभी एम्प्लॉयज़ रुकता नहीं है. 2-3 साल इज़ एन एवरेज टाइम पीरियड दैट एन एम्प्लॉय स्पेंड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ग्रेजुइटी एक्ट से कि आपको कंट्रीब्यूशन 5 साल तक जमा होगा, आप 5 साल पूरे करोगे तब आपको मिलेगा. सो अगर सपोज आपने 2 साल में अपने अमाउंट सैलरी में से कटवाया है ग्रेजुइटी का, वो जमा होता जा रहा है बट इट डजंट कम बैक, यू विल नेवर गेट पेड. इट गेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो वहीं रह जाता है. उसका एक कंडीशन ये है कि 5 साल पूरे करने चाहिए तब मिलेगा, तो वो थोड़ा नुकसान हो जाता है. So though it's not really a very huge chunk, तो इतना हमारे पे असर नहीं पड़ता है when we are in an organization. But again, why to have this when it is not more benefit? तो ये थोड़े से एक्ट्स हैं, इनके कुछ अमेंडमेंट्स भी होते गए हैं बाद में. वो सब अमेंडमेंट्स भी बुक्स में ऐड होते जाते हैं. So it's good that you have, if you are creating a serious career in HRM, ये सब पता होना चाहिए. रट्टा मार के एकदम अच्छे से भूल लो उसको अपने दिमाग. It should be on tips, you know, like I am not referring to any books, no note. ये tips पे क्योंकि हमने काम किया है इस पर, है ना. हमें पता है प्रोविडेंट फंड कैसे कटता था, कितना करना है, ये सब चीज़ें किया हुआ है. अब आजकल के रूल्स नहीं पता बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इट फॉर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन. तब 20,000 लोगों का सैलरी बन के जा रहा है अपने हाथों से, तो ये सब दिखता था. नाउ इट्स नॉट हैपनिंग दैट वे, सो नॉट रियली मच इंटरेस्टेड कि क्या चेंजेस हुए हैं. और थोड़े बहुत चेंजेस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है तो भी नहीं. सो टिप्स पे जितना अच्छे से रहेगा ये उतना, जैसे लॉयर होते हैं ना टिप्स पे रखते हैं सब चीज़ें, रेफ़र नहीं करते हैं बुक खोल के लॉ केस लड़ रहे होते हैं. तो यू हैव टू बी लाइक दैट. एनी एम्प्लॉय कैन कम एनी टाइम एंड आस्क यू क्वेश्चंस. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन HR. इनिशियल ईयर्स पे नहीं होगा, सो इट्स गुड दैट यू कैन यूटिलाइज इनिशियल ईयर्स टू स्टडी मोर अबाउट एक्ट्स. But later years, when you reach to a level of manager, senior manager, then it becomes very important. Okay. So that's all about it. Let's meet tomorrow and practice compensation management. Okay, ma'am. All right. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Any Thank you, ma'am. questions you have, just note those questions down and you can discuss. I'm sharing the PPT right away in the group so that you can go through it. Okay, ma'am. And ma'am, do we have the discussion on that case study you gave on So that's Wednesday? just for reading. We can Okay, discuss it on Wednesday. Completely. Okay. If you get time. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. All right. Thank you. Good night, everyone.